to take this topic in Read and Reveal. Mohan Krishnan sir had suggested this. He's here. He'll be co-hosting the show today. So before I call him up, I would like to ask everyone that how many of you have read the book on money management? So you can all talk about this, and then Mohan sir will be giving us some tips on cyber crimes and money management. Asha ma'am, you all can unmute yourself. Unmute and also come on camera so that we can see each other. Yeah. I have not read, but I have seen a video on money management by Okay. Rachana Ranade. She is a chartered accountant and a very famous YouTuber. Yeah. So I have learned few things from her. Okay. So would you like to share some details in Yeah, detail? some details in the sense that the first thing she said that the first thing is one should do term insurance first. Term insurance is a must. Second important thing is health insurance, which is very mandatory for all age groups. And third thing is investment in maybe mutual fund or shares, whatever. Yeah. So these are the basic things, but it has to be done step by step. I mean, if you are a newcomer, I mean, if it's a youngster, then first he has to keep 6 months savings in his saving bank account. Then balance money, then he can start investing by systematic investment procedure in SIPs and term insurance and health insurance, which are mandatory for youngsters. Youngsters. Yeah. And what about after retirement plans, sir? Yeah, retirement plan is equally important for people who are middle-aged or right from the beginning also it can be done. But Yeah. unfortunately, in my case, since I have worked in a private pharmaceutical company, Okay. I never thought of doing this retirement planning. So I have to do it. I did it only after I got retired and I got some lump sum amount. Then only I could invest. Oh, yeah, you could invest that amount in Yes. yeah. Okay. So I also follow Rachana Ranade. She gives lectures on share markets and all. Yes, Yeah, she is very famous. yes, very famous. Yeah. So thank you so much, sir. Um, Next, Vijay ma'am. Ma'am, you can unmute yourself. You logged out. Okay. Oh, Uh, then Rashmi ma'am or Saroj ma'am, who would like to come first? Vijay is back. Yeah. Vijay ma'am, could you please unmute yourself? I'm sorry, I logged Yeah. out and then. Yeah. No problem. Hello, Mohan sir, Archana. Actually, I Uh, didn't find that book. I think I missed it. I You couldn't can read any book. I had asked to read any book on money management. Yeah. Okay, sorry, I couldn't No, read. but you can talk about your experiences and how do you like to invest and all, so that people will get an idea about it. Okay. Yeah. Like sir has talked about it just now. For a senior citizen, first one is health insurance. That's mandatory to have Right. that. And after that, mostly senior citizens go for, I think, go for fixed deposits or post office savings and all. But nowadays, I think in mutual funds also, there is a possibility of less risk investments and all. I'm not much aware of those things. So mostly FDs, post office deposits. Yeah, there are schemes for senior citizens in post Yes, office. Yeah. in which you get a regular income like quarterly interests and all. So that's one source of income, apart from in case you have pensions and all. Right. And then health insurance is a must. What else?
if anything strikes to me, I'll convey Sure, it. ma'am. Sure. I'll share it. Thank you so much, Thank you ma'am. so much. Thank you. Hannah, ma'am. Yeah, ma'am, could you please unmute and come on camera? Yeah. Okay, then Rashmi Verma, ma'am. I think she's not able to unmute herself. Rashmi Verma, ma'am. Okay, Saroj, ma'am. Are you there? Yes, ma'am. See, investments are very important in our life. Anytime you can cash them up, whenever there's requirement. Like when I was young, I started with a minus balance when I was married, and I started my life with not zero, but minus balance. And to begin with, people think that doctors, they have a lot of money, but that is at the end. To begin with, hardly you are educated, you have certificates, but you have no money to set up the hospital and whatever. So you Mhm. have to take loans and all that. I had invested in LIC, life insurances, on which you can take loans. I had taken loans on my premises and all that. And in between, I had to cash everything when I had to get my daughter married, and then my son get for send him for a higher education. So now at this age, like, Yeah, so you spent your savings on all these things, right? yeah, Okay. because I started with, as I told you, I started with minus balance. I Mm-hmm. had to begin with, I had took loans. I had no money. I had no place to live. I got married, and just 6 months before that, my father-in-law, who was a Mm-hmm. businessman, Mm-hmm. he lost. I mean, we lost him in a major road accident. Oh. And because he was a businessman, what they used to do, like he was in a jaggery business. He was from Kolhapur, Mm-hmm. and they were in jaggery business, and they did over trading at that time. Just before his demise, there were lots of this thing, what do you call, they had done a lot of hoarding of jaggery. You know what they do in hoarding? वो चीज को जमा करके रखते हैं और फिर Mm-hmm. मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है. They show shortage in the market, Yeah. or if suddenly then the prices go up. That's what they had done. He used to take money from other people and invest in other people's behalf. And when he died in accident, there were lots of creditors, and we had to pay them off. Okay. And though my in-laws, they were very rich, they had 6 bungalows in Kolhapur, but there was, now after his demise, we had to sell everything. And there's only one bungalow is there in Kolhapur. Mm-hmm. And then because every time the creditors used to come home, my brother-in-law told us to go to Mumbai and settle down in Mumbai, where the creditors won't come and they won't harass you. Yeah. So we went without any money in hand, to Mumbai. It is not very easy to settle Live. down. Yeah. Yeah. Yeah, so I didn't have a place also to live. Oh, my father gave me first a house, and then we took loan, and then gradually, we Mm-hmm. paid it off, and then we had invested in insurance and some of the mutual funds at that time. I think it was PPF or something. So Nitin will tell us. PPFs. Yeah, something like that we had. But Mm-hmm. everything we had to encash when I had to, get my daughter married and my son sent for higher education.
my both children, they studied in Australia, so the fees were also very high. Hi, We had yeah. to, yeah. So So for your uh, retirement, what did you plan in those days? after I had little investment in mutual funds, that was not much. Mm-hmm. And when my husband died, I got insurance, some Okay. insurance. And then because my husband died, we used to practice together. I carried on for 2 years after that. Mm-hmm. But then my children were insisting that come to Australia and live with us. You are staying there alone. So I had to sell off my premises. So Okay. my hospital premises, and because the whole building where my hospital was there, it was undergoing renovation, Mm-hmm. not renovation, redevelopment. Okay. So when my husband was there, he was reluctant to undergo, sign for the redevelopment. Mm-hmm. But ultimately, I gave consent for redevelopment, and the whole project actually was held up because of us, because we had a lot of space there. We had a 20-bedded nursing home, and there was extension, and there were polyclinic, and lots of property was there. So all that went in redevelopment, and I got a lot of corpus fund, and Then you shifted to then I got Australia. some flats instead of that, Mm-hmm. because ultimately to get that much money uh, in return of in the sell after the sale of my hospital, I had to invest somewhere. So I invested again in the property, Mm-hmm. and I invested in mutual funds, and I have some fixed deposits, and some tax-free investments are there, Yeah, for FDs. senior citizens, there are tax Yeah. investment plans. And then there are SSCS thing, something, you get 15, now you get actually more, 15 lakhs free of tax if you invest in SSCS. SSCS, is it for It must senior be citizens nine. or youngsters also? Sorry? Is it for senior citizens only or for the youngster also? Yeah, it is for senior citizen. For senior So citizens. Only senior previously the citizens. limit was 15 lakhs, but now they have Mm-hmm. increased. I think it is 30 lakhs now. So that is for Okay. Yes. senior citizen, which you get tax free. No, it Does is he not know, tax free, madam. Nitin? Can he Who is saying it is not enlighten us? tax free? Sorry? Yes, sir. Rajendra sir, Madam, it is tax free. it is tax free. It is not tax free. 50,000 Okay. के ऊपर इंटरेस्ट Yeah, जाता it है तो is बैंक tax free. काटता नहीं. It is हाँ, tax free. Yeah, it नहीं is tax 15 free. लाख. यू आर कितना टॉकिंग के ऊपर? बैंक. नहीं, आप जो बैंक की बात करते हैं वो 15 लाख 30 लाख की बात कर रहे हो वो है मैडम. वो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट जाता है तो टैक्स कटता है. Sorry? 50,000 सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट आता है साल में वो टैक्स काटते हैं. 15 लाख और जो अभी 30 लाख है नहीं है. Sir, we are not able to hear you properly. ओके ओके. Yes. हेलो हेलो. आप हाँ सर बोलिए. अभी सुनाई दे रहा है. हाँ हाँ. जो मैडम बोले ना जो 50 लाख है बैंक में हम्म. सीनियर सिटीजन के लिए. हम्म. हेलो. हाँ सर बोलिए. उसमें जो 8.20 जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं है. इंटरेस्ट के हाँ. ऊपर जाता है तो बैंक काटती है. Okay, Yes, it is taxable. it is taxable. 50,000 पर टैक्स होता है. Okay. सो सीनियर सिटीजन दिस इज 50,000 फॉर हम्म. 10,000 फॉर नॉन सीनियर सिटीजन. अच्छा अच्छा. Okay. Yes, Saroj ma'am. So then there are SIP schemes, SIP, where SIP. regular, systemic, regular, investment, which Mhm. I'm not going for, because ultimately I won't be using that much money. Of course, that is also good actually, which my children can use later on.
But I think there is no point in doing that, and I straight away invest in mutual funds, and I've got a portfolio manager who looks after, and I actually don't know much about it. Mhm. But I now I have started learning a little bit the terminology at least in mutual fund, which I didn't know before. Okay, And I'm learning. I'm learning. that's Then nice. there are bonds. There is investment in gold. Yeah, gold bonds Yeah, are there. Yeah. yeah. Thank you so much, ma'am. Next, who would like to talk about it next? Asha, ma'am. I do not have much experience in this field. But you must have invested some amount, or you must have planned your retirement life. Uh, I personally have done Mm. only in State Bank of India, very safe. I Mhm. try to play it. Like they have this scheme, Mhm. uh, FDs, Okay. like 30,000 is the limit. For Mhm. myself, I did that. Okay. And at post office Mhm. and other things, mutual funds and all. I don't look after that because I had never put my mind into that. I wish to learn that now, and I'm very grateful that Mohan sir will be educating us with many things Yes, now. yes. Yeah, it will be very beneficial Yeah. session for you. So my husband, my sons, they take care of other things. So I like mutual funds and Mhm. other things like any other place investment. Mainly in these, I feel is that much whatever government's facility has been granted to us that Mhm. we should do and fix there. After that, We should know all senior citizens schemes so that we can invest. yes, Yeah. of course. So I Who'd like? Yeah, thank you so much, ma'am. Who'd like to talk next? Shobha ma'am, Rashmi Arora ma'am is here. Yes, Rashmi ma'am. I had planned a lot Mm-hmm. initially. Okay. I can share you that. And from that, from a bit to lots of things, we had made it. Mm-hmm. When I got married, after Okay. that, I was getting pocket money. Mm-hmm. And that was uh, 500. And my husband, he said, you'll just take out 10 rupees every day from my pocket. And I said, ये तो चोरी होगा. मैं नहीं निकालूंगी. And he used to give me 100 rupee, 10 rupees every day. So that 300 plus 500 was the pocket money. From that 800 at the time of 1981, Mm-hmm. that was a lot. Yeah. So, and I was not that much educated and there was nobody to guide me. So in general, what ladies, they do think, I have one goldsmith where my mother-in-law, they used to go. So that time, I think gold was 1,000, I think, roughly. Didn't remember much. So I Mm-hmm. used to save that money because just after the marriage, we don't require lots of things are already in the cupboard and all. And lots of gifts and all are there. So you don't require that much. So I used to save that money. And I used to call that goldsmith and कि मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, I want to invest in any saving purpose. Okay. So आपके पास जो होगा वो मुझे दे दीजिए. So then he used to give in the bangle form. Okay. Then when you'll resell it, so usme they don't cut the percentage of anything, that you'll get the whole amount. So that way I had kept lots of gold and I used to call him. I've sent money to my husband's office, or sometimes when I'm in the office, that time they will bring that. I used to tell them the amount and I used to save. And Okay. then I invested in that way a lot. Lots of jewelry, I kept it. And then in my family, there was some incident happened, and my one brother-in-law, he Mm-hmm. had divorced his wife. And that I was unable to accept it because
when she left the house, they had a fight. She left the house, and then my brother-in-law went to the bank because it was a joint locker. He Okay. took all the jewelry out and kept it to mother-in-law. He doesn't want that she should get that. So Mhm. that has disturbed me a lot. Even one brother can do it, so that may another might be. So that was a question mark in my mind. And how can a mother will keep that all? That was also a question mark. So Mhm. then I started hiding from my husband. So Mhm. then I have kept another locker that was on my single name. Whatever I used to buy, I used to keep separately in that locker, because That's at nice. Mhm. that time you don't need to show so much. And then Yeah. slowly Mhm. that got lots of savings. अब इतना गोल्ड का क्या करा जाए? Then देखा कि कुछ मैंने फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ, and we have to, Okay. they've just kicked us out. So through that, I given the goldsmith back and I got the money cash and Mhm. invested in one house. We Okay. have purchased one house. So in that manner, I had purchased the gold, and when there was a lump sum amount, I used to resell and I purchased one house. That way we had purchased 2 flats, 3 houses. Okay. And for your retirement, have you planned anything? Like, No, do you ma'am, plan? at that moment I'm telling you, Mhm. and it was like never thought about it, because that time never think of these all things. And Yeah. when my husband has got cancer at that time, Mhm. in 2001, Okay. when I have to take care of the responsibility of the finance, Mhm. responsibility of the children, that Mhm. time I started learning, and I had a CA also for my school's fund and all. Then I got to know my husband has only one LIC of 2 lakhs Okay. in 2001. Mhm. And that uncle was my papa's some friend. Mhm. He was the LIC agent. He called me, बेटा क्या किया जिंदगी में? I said, क्या हुआ अंकल? बोला राकेश ने सिर्फ 2 लाख का LIC किया एंड ये सफरिंग विद कैंसर, क्या होगा आगे फ्यूचर? कुछ नहीं इन्वेस्ट किया. Then I have started planning about, given हस्बैंड का LIC कराया, बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग किया, खुद का थोड़ा किया. पर Mhm. उनके वो अंकल के साथ ना कुछ थोड़े पैसे जुड़ते थे, तो NEFT करते थे, एंड कुछ कुछ फिक्स डिपॉजिट भी करना सीखा था, बिकॉज जैसे किसी की तरफ से कुछ गिफ्ट आया Mhm. कैश वगैरह, तो वो आई यूज टू पुट ऑन FD. एंड उस टाइम में ना 4 years में शायद FD Mature. डबल हो जाता था, Okay. हाँ तो हाँ. फिर उसको री इन्वेस्ट करते थे. देन आई हैव लर्नड कि उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे रेकरिंग भी खोलना. दैट ऑल आई हैव डन इट. Mhm. एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाज ओनली इन LIC एंड ऑल. फिर हस्बैंड को समझ आने लग गई थी, एंड एक टाइम ऐसा आया था कि बिजनेस वाइंड अप होने के बाद ही वाज इन डिप्रेशन कि ही Mhm. इज नॉट अर्निंग एनीथिंग. फिर उनके ऊपर सारा काम छोड़ा था, जितना भी पेपर वर्क एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा काम उनके ऊपर छोड़ा था, सो दैट दे हैव डन इट. तो अभी Okay. उतना आइडिया नहीं है. तो अभी जितनी भी चीजें हैं, अभी राइट नाउ आई हैव सोल्ड वन प्रॉपर्टी, Mhm. एंड अगेन फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी से आई हैव टेकन अनदर फ्लैट. अभी री इन्वेस्टमेंट करने के लिए नाउ छोटा बेटा इज BCom स्टूडेंट, MBA किया हुआ है. तो नाउ So आस्किंग हिम टू kids डू द are taking over. इन्वेस्टमेंट्स. यस, ही इज डूइंग इट. अब इसमें मैं कुछ कुछ प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, Mhm. ताकि उससे कुछ यदि होता है बेनिफिट, तो आई कैन जस्ट फॉरवर्ड दैट. Yeah. एंड Mohan sir कोशिश is here. होती है. So हाँ, he'll. कोशिश होती है. नहीं, मोहन सर का तो इसीलिए मैंने कि ये मस्ट है फाइनेंस प्लानिंग का सुनना. Mhm. तो कोशिश यही होती है
कि आगे कहीं से कुछ मिले। तो जैसे हस्बैंड को भी मैंने बताया था कि आपका यदि कुछ डिजीजेस हैं तो वो भी आपके टैक्स बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे कुछ कुछ प्रोग्राम्स हो तो देखूं। लेकिन आजकल तो सब जगह ना फायर स्टिक आ गया है, तो आजकल वो वाले प्रोग्राम मिस हो जाते हैं। तो ओके। पहले पहले आपके जो टाटा स्काई या आपके जो केबल टीवी में होते थे ना, दैट टाइम इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू लर्न दैट ऑल। या वो अभी थोड़ा सा समझ, शेयर का तो बिल्कुल समझ भी नहीं आता है। आज somebody कि भाई यदि मुझे शेयर वेयर का सीखना हो तो कहाँ से सीखते हैं? बोले हम लोग हैं ना, हम लोग आपको, नाउ देयर आर द ब्रोकर्स कि या दे आर द बट वी मिडिल शुड नॉट मैन। ट्रस्ट देम ब्लाइंडली बिकॉज नहीं या। नहीं, इसीलिए बेटे को ही कुछ भी आता है तो फॉरवर्ड करती हूँ। एंड वी आर ट्राइंग टू गो ऑन। अभी हमने जैसे ग्रोन पर बेटे ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, हम्म। तो ऐसे करके Yeah, अभी there are हमारे so many platforms to invest, but एक जगह first we ऑलरेडी should, फंसा हुआ है। एक yeah. जगह ऑलरेडी फंसा है कि वो मैं लास्ट में मोहन सर से, मेरी और एक मोहन सर का था, तो Mm-hmm. मैंने वो प्रोग्राम में पूछा था। तो आजकल के बच्चे जो है ना, वो लोग को होता है कि कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां इन्वेस्ट करना है। तो उसने किसी जगह, आजकल ऐसे निकले हुए हैं कि आपके कई बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, किसी Mm-hmm. और की जमीन है, बिल्डर कोई और बना रहे, इन्वेस्टमेंट किसी और का हो रहा है, एंड देन दे पे यू। तो बेटे ने एक जगह वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया था, लेकिन अभी 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए, वहां से कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, वहां रुका हुआ है, फंसा हुआ है। सो दैट दे आर सेइंग जिसकी जमीन थी उसने कहा मैं खुद बनाऊंगा। बट दैट वो जमीन Oh. निकलेगी तो दैट विल कम, बट आई डोंट नो हाउ मच विल कम एंड ऑल। Mm-hmm. बट बच्चों को सिखाते सिखाते खुद को भी सीखना, आई एम थिंकिंग इट इज मस्ट। Yeah, it is. Thank you so much, थैंक ma'am, यू, for थैंक sharing. यू। Yeah. Uh, Dolly, ma'am. Yes, Archana, I don't have any experience in this field. मैं यहाँ आई इसलिए हूँ कि to educate myself. मोहन Okay. सर को सुनने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि Mm-hmm. फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत जितना मैं समझ सकूँ, थोड़ा ये भी मुझे जानना है। एफडी करना बेस्ट ऑप्शन है या जैसे कि रश्मि जी ने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया वो Mm-hmm. बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि आजकल ये भी तो लगता है ना कि आपका मनी जो है वो सेफ हैंड में जाए, आपको Right. जब जरूरत है तो वो मिलनी भी चाहिए। तो वो थोड़ा सा मैं खुद इस चीज को समझना चाहती हूँ। एफडी है, म्यूचुअल फंड्स है, थोड़ा सा मेरे को अभी बताया गया कि ये सीनियर सिटीजन अकाउंट में जो है शायद अच्छा इसमें मिलता है। Interest तो ज़्यादा मिलता है, हाँ. इंटरेस्ट इसमें ज्यादा, शायद 3% इसमें ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ बताया था। तो थोड़ा सा मैं भी अपने आप को एजुकेटेड करना चाहती हूँ इसमें कि थोड़ा समझ में आए मुझे भी, Right. क्योंकि मुझे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो अच्छा है, थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी सर की। Yeah. Who would like to talk about investment, their investment? Hannah ma'am is here, then yeah, Rajendra sir. हाँ सर, मैडम। गुड नमस्ते इवनिंग sir. मैडम। गुड Good evening इवनिंग। sir. Yeah. अभी सुनाई दे रहा है? सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है. ब्रेक कर रहे हाँ, हैं। अभी आप अभी आ थोड़ा रही? नेटवर्क एरिया में आ जाइए. ओके, नहीं नहीं मैं हूँ, सुनाई दे रही? आपने हेडफोन वगैरह कुछ लगाया है क्या? नहीं 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 रहा है। अभी 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 आ रही? हाँ, आ रही है आवाज, बट कट कट होके आ रही है. हेलो। हाँ, बोलिए सर. अभी आ रही बारा? हाँ. देखना बस ऐसा है जो जानता हूँ, होता है हाउ टू इन्वेस्ट मनी आपके। सर बहुत ब्रेक हो रही है. आप आपका वीडियो ऑफ करेंगे क्या? थोड़ा बैंडविड्थ बढ़ जाएगा उससे. हाँ. अभी हाँ, अभी ठीक है. हाँ. अभी ठीक है। हम्म. देखो, हम हमारे एलआईसी में है ना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम्म. एक ट्रेनिंग सेशन होता है, हाउ टू हम्म. इन्वेस्ट द मनी आफ्टर रिटायरमेंट। जो ओके. आपके पास रिटायरमेंट का जो फंड आता है वो कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उसका थोड़ा बहुत जो मेरी नॉलेज है वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाँ. सुनाई दे रहा है बराबर? हाँ, एकदम परफेक्ट है. हाँ। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या है कि 30 लैक्स, अभी पहले 15 था, अभी 30 लैक्स
आप बैंक में कहाँ, जहाँ आपको 8.20 इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है, 30 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक में। हेलो 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 कंटिन्यू हेलो। टू स्पीक। राजेंद्र जी सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए, वी आर हाँ लिसनिंग हाँ टू यू। हाँ हाँ, तो 30 लाख तक हम इन्वेस्ट कर सकते वो हैं हेलो बैंक हेलो से कोई फीडबैक नहीं आता, आप बोलते जाइए, अगर हम ओके नहीं समझ में आए तो ऐसे करेंगे, इसका मतलब है ओके सुनाई नहीं। ओके सर। तो 30 लाख तक हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है 8.20 के आजू बाजू। अभी पहले प्रधानमंत्री वय योजना था LIC में, वहां हम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री वय योजना शायद बंद हो गई है, तो वहां कर सकते हैं। और पोस्ट में हम 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोस्ट में, ओके। पोस्ट ऑफिस में। और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट का, गोल्ड की जगह सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आता है पोस्ट ऑफिस, और उसका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आता है, उसमें उसमें अगर इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आता है, उसमें आपको 6 महीने में 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, और 8 साल के बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसमें टैक्स लगता नहीं है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड वो आप 4 किलो तक, मीन्स 4 किलो तक आप ले सकते हो। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम से करके आप 4 किलो तक ले सकते हो, और उसकी जो प्रोसीड्स आती है एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो इंटरेस्ट फ्री होती है। दैट इज द मेन और थिंग। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग इंटरेस्ट एंड नहीं यंगस्टर्स के नहीं, लिए अलग, वो ऐसा गोल्ड बॉन्ड कोई भी ले सकता है, कोई भी ले। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड कोई भी ले सकता है। और ये टैक्स 8 साल के बाद अगर आप उसका जो पैसा आता है, जो हम्म मार्केट वैल्यू होगी, अभी अभी 70,000 मार्केट वैल्यू है, 8 साल के बाद उसका 1 लाख होगा, तो आपका जो 1 लाख रुपया आएगा वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके। और हर 6 महीने आपको 2.5 इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्सेबल है, वो आपको बताना है इनकम में। ओके। एक और गोल्ड बॉन्ड पे 2.5% मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 6%, हर 6 महीने हमको हम्म 2.5 इंटरेस्ट मिलता है, हर 6 महीने में। हर 6 महीने में। ओके। और आठ आठ साल के बाद, और 5 साल उसमें के बाद। नहीं, राजेंद्र जी, हाँ आपको गोल्ड बॉन्ड में एनुअल इंटरेस्ट 2.5% मिलता है, 6 मंथ्स में 1.25% नहीं, मिलता है, 2.5 है सर, 2.5 है। 2.5 पर एनम। नहीं 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 सर, आप चेक हाँ कर पर लीजिए। एनम, हाँ पर गोल्ड एनम, में आप, पर एनम, पर एनम गोल्ड में बराबर। पर एनम का मतलब है एक साल में एक बार आपको वो हाफ ईयरली मिलता है पैसा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। पर एनम का मतलब है साल में एक बार आपको, ओ 6 कोई महीने बात। में एक बार आपको 1.25% हम्म। टैक्सेबल इंटरेस्ट क्रेडिट होता हाँ हाँ, टैक्सेबल इंटरेस्ट का राइट। और दूसरा तो जो म्यूचुअल फंड में हम थोड़ा SIP और वो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मेरा ऐसा मानना है। इतना ओके। इतना सब थोड़ा सेफ और SIP थोड़ा ग्रोथ के लिए SIP में इन्वेस्ट करना जरूर होता है, अच्छा होता है। अगर थोड़ा थोड़ा हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमको 12% के आजू बाजू, हम लॉन्ग टर्म तक अगर वेट करते हैं हमको 12% तक मिल सकता है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना बहुत कम है बैंक और इसमें। FD और वो सब डेट फंड है, FD और ये सब में इंटरेस्ट इतना मिलता नहीं है, फिक्स या बहुत डिपॉजिट और कम मिलता है, मैक्स बहुत बहुत कम। 7.25 मैक्स हाँ वो मिलता है। बहुत कम मिलता है। तो म्यूचुअल फंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो SIP, तो इट विल बी मोर, और आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, 5 साल 7 साल 10 पाँच साल साल तक। मिनिमम तो करना पड़ता है, सो यस दैट यस, थोड़ा डिसेंट अमाउंट मिल जाता है। जो मैं जानता हूँ, जो मैंने किया है वो आपको बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस? आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बोल सकते हो आप। धर्मेंद्र सर इज हियर। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग, हाय। आफ्टर सो लॉन्ग। या मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल, बिकॉज ऐसे कमिटमेंट्स है कि आई हैव टू कंटिन्यू कीप इट अप, लेट नाइट तक में बैठना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बोल रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी में मुझे इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी, मैं इनफैक्ट थोड़ा कॉशियस देना चाहूंगा आपके यहाँ पे। जैसे पूना में एक गोल्ड ज्वेलरी ने स्कीम निकाली थी, बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ केसेस वेयर द पीपल्स मनी हैव बीन ड्यूप्ड, ओके, और अनऑथोराइज एक्टिविटी हो चुकी है उनके घर में। एक मेरा फ्रेंड था, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, ही वाज आल्सो इन बॉम्बे, देन ही टोल्ड मी कि मैं, उसने हैदराबाद में कुछ प्रॉपर्टी ली है, एंड वो तो सडनली कहीं से कुछ मशरूम हो गए पीपल, और उन्होंने कहा कि हमको रेंट पे चाहिए। एंड रेंट में मतलब नॉर्मल एरिया का रेंट अगर लेट से 20,000 या 25,000 होगा, तो ही सेड कि वी आर ए वेल फैमिली एंड ऑल, देन सर 40,000 से ज्यादा आपको रेंट नहीं दे पाएंगे।
तो दिस फेलो सडनली गॉट सरप्राइज, कह रहे चलो 40,000 रुपया रेंट मिल रहा है, तो ही गेव हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड एग्रीमेंट वगैरह सब बनवाया. यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर सम टाइम when this gentleman is in Mumbai, he got a call from his neighbor. I don't know why fight हो गया कि आपके घर में some unauthorized activities वगैरह हो रही है, please come immediately, otherwise we will lodge a police complaint. Okay. Okay. These people had to, the person had to fly from here, and when he went there, then he said, okay, this ultimately your house has been turned into like a brothel house. Some girls are coming and staying here, and some cars are coming and stopping in the night. We find some drink parties going on and all these things. So this person had, he had to, मतलब really tough time to get them out also, because they were with the muscle power, they were from the very gunda type of background वगैरह था. So it became very difficult for this gentleman. That is one case. Second thing, एक बार जैसे कई बार आपके रेंट के घर में कोई घुस जाता है, तो थर्ड थिंग, मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ कि आई ऑलवेज लाइक ए बिगर हाउस, तो मैंने मेरे लिए जब एक 3 BHK 1400 कारपेट का मैंने घर लिया था, इट डिडंट गो, क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ गई है. तो बोल रहे सर 1400 कारपेट का घर खरीदने के लिए कोई बड़ा बिजनेसमैन चाहिए आपको इन ए सिटी लाइक बॉम्बे, व्हेन इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 CR का बिल्डिंग होता है. तो अगर आजकल क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली हो गए, तो 1 BHK होता तो आपका मैं इमीडिएटली बेच सकता था, तो एटलीस्ट 2 BHK होता तो भी चला जाता था. अभी 3 BHK है, एंड नोबडी वुड लाइक टू सेल प्रॉपर्टी एट वेरी लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन में. तो इट वॉज ए वेरी tough time for me to sell my property. That's another experience. जो मैं पूना की बात कर रहा हूँ, वहां पे ऐसा था कि खास करके लेडीज को अट्रैक्ट करने के लिए पूना के एक ज्वेलर ने ऐसा कहा था कि आप हमको 10,000 रुपया महीने देंगे, तो आपका 11 महीने में 1,10,000 होता है. ओके, 10,000 रुपया अगर आप देते हैं तो 1,11,000, 1,10,000 होता है. बट एट द ईयर एंड 1,25,000 रुपीज का आप ज्वेलरी हमसे ले सकते हैं. ओके. एंड यू विल नॉट बिलीव दैट मैनी लेडीज जो जैसे हार्ड वर्किंग, जो सैलरी से बचाती है या पति से कुछ पैसा लेके बचाती है, उन्होंने किसी ने 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 ऐसा महीने का किट्टी बनाना चालू किया इन्होंने. एंड दिस फेलो ऑल्सो गिव समथिंग. अब आप बताइए, सबसे ज्यादा ज्वेलरी में सोने लोग जो खाते हैं, सुनार लोग खाते हैं, वो होता है मेकिंग चार्जेस. ओके, जो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है. अब वो बोलता है कि ये जो है, इसका मेकिंग चार्ज मैं 400 रुपया पर ग्राम लगाता हूँ या 300 रुपया पर ग्राम लगाता हूँ. ओके, we don't have anything to challenge it, okay, unless and until you compare to somebody. तो एक तो उसी का सोना ले रहे हैं आप लोग, one thing. Second thing, making charges also he is earning out of that thing, okay. और आपको बोल रहा है, तो अभी वो बोल रहा है कि sometime गोल्ड में तो क्या होता है कि जब आप परचेस करते हो, तो उसके बाद में आप डेली तो चेक नहीं कराते हो कितना ग्राम का और कितना कैरेट का है. आई माई ओन मदर सैलरी ज्वेलरी व्हेन आई वांटेड ए मनी. तो मेरे जब मदर की पुरानी टाइप की ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा अभी तो मदर नहीं है, इसका करना क्या है मतलब. सो आई वांटेड टू सेल इट ऑफ बिकॉज आई वांटेड सम फाइनेंस. तो जिस दिन मैं गया, अब पता नहीं मदर ने कहाँ से किस ज्वेलर से लिया वो भी नहीं मालूम है, बट ही सेड कि सर ये आपकी 18 और 20 कैरेट से ज्यादा नहीं है आपकी ज्वेलरी. अपार्ट ऑफ दिस थिंग, अगर मैं इसको मेल्ट करूंगा तो इसमें से इतना कट जाएगा, इसमें से उतना कट जाएगा करके अल्टीमेटली व्हाट माय एक्सपेक्टेशन, इट जस्ट केम टू 70 और 65% टू दैट मनी. ओके, सो माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट व्हेनेवर वी इन्वेस्ट, ऐसे ही आजकल शेयर मार्केट के लिए भी बहुत सारे, आप देखिए फेसबुक ओपन करिए, देयर आर एम्पिल ऑफ द एडवाइजर्स अवेलेबल, सब मास्टर बन चुके हैं. इसमें डालो, उसमें डालो, हमारी टीम ज्वाइन कर लो. गुजरात में मैडम अभी जो लेटेस्ट आया है, अहमदाबाद में एक 86 करोड़ रुपीज एक एजेंट लेके भाग गया है लोगों का. देन उसको क्या बोलते हैं ये लोग, एक क्या ट्रेडिंग बोलते हैं, मैं भूल गया उसको. सब लोग साथ में मिलके, आप 50,000 डालो, आप 50,000 डालो, मैं 50,000 डालो के, उसको एक ग्रुप ट्रेडिंग कुछ बोलते हैं. सब टिपिकल वर्ड इज देयर. ओके, ऐसा कर करके इन्होंने कुछ अपने ही, और वो कई बार ऐसी स्क्रिप्ट दिखाते हैं, वो हमेशा डूबी हुई रहती है, बट आपके सामने वो ग्राफ एकदम 3-4 दिन में अपर सर्किट में जा रहा है, अपर सर्किट में जा रहा है, अपर सर्किट में जा रहा है. वो लोग ही एंड करते हैं सडनली वो डिफरेंशिएशन, ऐसा सुना है मैंने. उन्हीं के आदमी रहते हैं, ऑल द पीपल ऑफ देयर ओन एंटिटी दे आर डूइंग. तो ये सारी चीजें हैं, बिकॉज दिल्ली साइड में भी बहुत हो रहा है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो माई ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट प्लीज एंश्योर दैट इट्स ए हार्ड अर्न मनी. कोई लुक्रेटिव नहीं लेना है, जो भी मिलता है मिनिमम वो हम लोग लेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी
चाहे मैं थोड़ा कम कमाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बट मेरा पैसा मेरे साथ में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं जो 15 साल तक पैसा ब्लॉक हो जाता है, 20 साल तक पैसा हो जाता है। नो, हमारा मनी हमारे पास होना जरूरी है। ओके, आई हैव समबडी, प्लीज। Yeah, sure, sir. No problem. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Anybody wants to talk? Yes, Vijay ma'am. या अर्चना, Yes, तो ma'am. पहले जब गोल्ड होता था ना, तो उसमें हम्म। ये हॉलमार्क गोल्ड नहीं होता था। Right, yeah. डीलर के पास हम जब लेते थे, सो दे यूज टू से कि हाँ ये 22 कैरेट है। वी यूज टू बिलीव एंड वी यूज टू कीप द रिसीट एंड ऑल, और यूज टू बाई ज्वेलरी हो या कुछ भी। बट ऑफ लेट अभी जब ये हॉलमार्क गोल्ड आया है, सो वेन एवर यू टेक योर ज्वेलरी और ज्वेलरी, सो दे विल से कि नहीं ये तो 22 नहीं है, इट इज 18 19 लाइक दैट। सो Yeah. वो ओल्ड वाला जो गोल्ड था उसमें ऐसे ही हो रहा था। सो अच्छा. nowadays when we buy, तो इट्स हॉलमार्क गोल्ड, तो उसमें है कि प्योरिटी है, ऐसा वो बोल रहे हैं। सेकेंडली, ये जो इन्वेस्टमेंट, अगर ये पब्लिक सेक्टर बैंक या इस तरह के बैंक्स में अगर इन्वेस्ट किया, तो सभी बैंक्स का ऑलमोस्ट रेट्स आर सिमिलर। Yeah. बट इफ यू फील लिटिल ग्रीडी, अगर मैं वो वर्ड यूज कर सकती हूँ, तो in case you go for cooperative banks and all, where they used to give higher rate of interest, Yeah. usme people have lost lots of money because they offered 10 12 14% like that. तो जिसमें बैंक्स में जब इन्वेस्ट किया है तो दे डिडंट लूज, बट कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर इस तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट में वेयर देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड, उसमें ही लोगों का मनी गया है। राइट, बैंक्स ओवरनाइट भाग जाते हैं बैंक वाले। हाँ, बंद हो जाता है या फिर कुछ ऐसा होगा तो पीपल लूज मनी, उसमें ऐसा है। लाइक So we दैट should इन always हैदराबाद invest in आल्सो, government banks. आई नो, Yeah. एंड इन हैदराबाद आल्सो, इन मेनी सिटीज आल्सो, अगर एक 2 BHK का फ्लैट का अगर रेंट 25 to 30 है समझो, but nowadays this IT professionals are there, so what they do is 4 people they share the flat. Apartment. Yeah. Per head they will pay 10,000, so the owner will get for 40,000 for a 2 BHK flat, whereas if he rents it out to a family can pay 25 to 30,000. Right. लेकिन ज्यादा रेंट के चक्कर में जब इस तरह के लोग बच्चों को दे देते हैं ना, सो व्हाट दे डू इज व्हाट धर्मेंद्र सर जस्ट नाउ सेड, तो वो उस तरह का न्यूसेंस रहता है। उसमें ओनर जो है वो पुलिस के चक्कर में भी पड़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस पीपल्स एक्टिविटी एंड ऑल। सो जहां भी ना, जहां जितना रीजनेबल तक आना चाहिए, अगर वो उसके लिए इफ वी आर सेटिस्फाइड, तो हम ज्यादा ट्रबल में नहीं पड़ेंगे। अगर ज्यादा कमाने के इसमें जब जाएंगे ना, तो वी विल बी समटाइम्स इन ट्रबल। Yeah. ऐसा मुझे लगता है। Right. Thank you so much, ma'am. Thank you. Mohan sir, I think everyone talked about it. Would you like to give some ideas? Yeah, good. Nice. So many views are there. So I will start with a note of caution. Okay. आप कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, कैसे किए हैं, किसी को नहीं बताना है। स्पेशली पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलना ही नहीं। हाउ मच प्रॉपर्टी यू हैव, कहाँ आपने डिस्पोज किया, मनी इज गुह्य, सीक्रेट, किसी को नहीं बताना। डोंट शेयर, दैट इज पॉइंट नंबर 1. अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट मनी फर्स्ट. Money is not demanded for itself. Money is a means to a certain end. Money is demanded for what it can buy. Okay, that's it. So then it is a medium of exchange and there's a store of value. Where is money safest? Where is the money? कहाँ सबसे secure है पैसा? Banks. कहीं भी नहीं. Not even in your cash box. Money by nature is finite. It will either get spent, lost, or stolen. Okay. So money has to be taken care of with care. Suraksha.
And if you are not careful, it will give you BP. So money को कैसे manage करना है? या लक्ष्मी है. Money को कैसे manage करना है? You have to manage like Mahavishnu. बड़ा relaxed होके manage करना. Remember, I am not talking against gender or something like that. महाविष्णु लेटे हुए हैं अनंत शयन में और लक्ष्मी जी उनके पैरों तले है. मीनिंग कीप योर अटेंशन ऑन मनी. उसको सर में बिठाना नहीं है. You have to keep it where you can watch your money. This is the picture that is important. Now let us understand certain things. I'm not going into individual schemes at all. बहुत सारे schemes हैं. I'm going to take you through certain important guidelines. आपको first क्या करना है if you want to manage your money? आपको decide करना है कि you want to be a middle class money manager or go into higher class. If your aim is middle class, आप middle class से नीचे चले जाएंगे. Always remember what I told you in one of those sessions. If you want to reach the moon, aim for higher than the moon. आपको कभी नहीं सोचना है कि मिडिल क्लास ऐसे हैं तो ठीक है. दिस इज द इंडियन मेंटालिटी. ऑल द रिच मैन हैव टोल्ड यू मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस. आप मनी के पीछे मत भागो सो दैट उनका कंपटीशन कम हो जाएगा. सो दिस दे डोंट गेट इनटू ऑल दिस फूलिश स्टफ दैट मनी डज नॉट गिव हैप्पीनेस. मनी से कुछ मनी से बहुत कुछ होता है. और आपको मनी नहीं चाहिए ना, आई गिव यू माय जीपे नंबर, ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है. I need a lot of money. मेरे बहुत सारे projects हैं. I need hundreds of crores of money. So mentally be prepared that money is important. संस्कृत में उसको अर्थ कहते हैं. मीनिंग. अर्थ मतलब मीनिंग. अर्थ के माध्यम से आप अपनी जिंदगी की खुशियां खरीद सकते हैं. कामा, you can buy pleasures. Okay? ये याद रखना. Only then money will come to you. आप बोलेंगे नहीं चाहिए तो money will go away. So money is needed. Okay, but it is not uppermost priority. उसको second priority बनाइए. First priority is my life, my relationships वगैरह. For managing money, you should buy a good quality notebook first. Okay? Notebook में क्या करेंगे? You will write what is your source of income. और ये notebook आप किसी को नहीं दिखाएंगे. Okay? Don't show it to anyone. Show it only to the person who will inherit all these things. Maybe your son or somebody like that. Otherwise, किसी को नहीं दिखा. उसके एक prominent page में आपको लिखना है what are your sources of income. Pension, interest, then investment returns, rent. हर एक head को classify करके you have to put your source of income. Sources करना. So then, on the next page, you have to put down your expenses. Expenses go divided into two: essential expenses, inessential expenses. So wasteful, inessential expenses में खर्च कम कर. They used to say that once what happened, there was a world famous richest man in the world called Rockefeller. He went to a hotel and he said, होटल में जो cheap कमरा है वो मुझे दे दो. तो होटल वाला बोला, sir, when your sons come here, they stay in the costliest rooms. So Rockefeller said, their father is rich, my father is not. So don't throw your money around. Value for money we should know how to get. अगर money को फेंकेंगे तो लक्ष्मी बोलेगी कोई value नहीं है, she will go. So don't waste money, don't splurge. So inessential items बहुत carefully note कीजिए. Inessential, essential. And apportion it carefully. How you two will do in some other section. Then आपको एक और चीज याद रखना है. SLR. S means safety. L means liquidity. R means return. Do you want the money to be safe? Do you want to get the money whenever you want? And do you want to risk it? So I want safety first, liquidity second, risk later.
So if SLR principle ho, to your interest rate will be less. And if you say कि I am willing to take risk with my money, then RSL हो जाए, risk, safety, liquidity. Suppose you have 100 rupees, up to 80% you put it in SLR. 20% you can take a little risk. You have to, इसको कहते हैं आपका pain threshold. You have to decide how much you are willing to lose. 100 में 10 रुपए जाने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. So 10 रुपए जाने दो. In fact, Rashmi ji was saying, Rashmi Yadav was saying, 1981 में 800 रुपए पॉकेट मनी मिलता था. अरे that was bigger than my salary then. She was getting more pocket money by my salary. बहुत बड़ी बात है. Okay. So what happens is you put it like SLR. What are the sources of invest? What are the sources of invest? कहाँ पैसा डाल सकती है? Bank FDs, then company FDs, post office, mutual funds, gold bonds, बहुत सारे, stock market. These are the areas. जहां कहीं भी डालें, you should know where your money is. I was very sad to hear इसका मुझे कोई idea ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. If you have no idea of about your money, somebody will take it away from you. You should know. आपके नोटबुक में लिख के रखना चाहिए कौन से बैंक में कितने कितने पैसे हैं, कब रेन्यूअल ड्यू है, who is the nominee, FD में है. FD में है तो सीनियर सिटीजन will get 0.25% more. पब्लिक सेक्टर में आपको मैक्सिमम 5.5% मिलेंगे. प्राइवेट सेक्टर बैंक में यू मे गेट अप टू 8.25%. इज इट रिस्की और लेस रिस्की? जहां इंटरेस्ट हाई है वहां रिस्की है. बट इफ यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट बैंक, यू चेक विद द प्राइवेट बैंक, इफ आई लूज माई मनी, हाउ मच विल आई गेट फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस. रिजर्व बैंक ने कहा है कि इफ यू लूज योर मनी, द बैंक गोज फट, you will get up to 5 lakhs from Reserve Bank of India Insurance Group. So 5 lakhs you can keep your FD in private sector banks. Make a list of private sector banks. कौन सा है, which is good. आपको you have to study. Money management ने कभी भी idle नहीं होता. You have to actively manage. Actively, all the rich men in the world do not give the money to somebody else to manage. वो खुद manage करते हैं. As if you manage your money yourself, it will stay with you. Whoever manages money, उसके पास चले जाता है. There is a very beautiful Sanskrit saying, nothing, gender bias नहीं है. उसमें कहते हैं, रूपवती भार्या जन्म शत्रु. Suppose you have a beautiful wife, she can be your enemy if you don't know how to manage her. आप ऑफिस में बिजी हैं, फ्रॉम 8 o'clock in the morning to 12 at night, आपके नेबर को बोलते हैं यार भाभी को घुमाओ, भाभी को घुमाओ, भाभी घूम के चली जाएगी. Remember that. Okay, it is not gender bias. Money is like that. खुद मैनेज कीजिए. It's a very beautiful product. It is called Kanchan. It is called attraction has. So manage it yourself. So इसमें आप ही को डिटरमिन करना. If you want individually, I can tell you कि भाई कहाँ सेफ है, what are the safety measures. There is something called income that produces savings that the investment that produce regular income. Another set of investments produce returns. Systematic investment plan of mutual funds is good. लेकिन remember, mutual funds are subject to mass market risk. वो बहुत fast बोलते हैं. Mutual fund सही है, धोनी बोलता है, विराट कोहली बोलते हैं, लेकिन उसके बाद में बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. वो बहुत फास्ट बोलते हैं. सो प्लीज चेक योर म्यूचुअल फंड योरसेल्फ. देयर इज आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म में जाके आप देखिए म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है. प्लीज मैनेज एवरीथिंग योरसेल्फ. एंड म्यूचुअल फंड में जनरली द ग्रोथ इज गुड. लाइक 1960 में व्हाट द म्यूचुअल फंड वाज, एंड इन 64 years it has grown 300 times. ऐसा ग्रोथ कहीं सेफ ग्रोथ है ही नहीं है. Money which I put about 5 years ago has doubled, 7 years ago has doubled. So safely you plan, manage it yourself, but discuss with people. Discuss with people who do investments. बोलो कहाँ करना है. Seek consultation, but decide yourself. Okay.
Then comes stock market. Before you even put 1 rupee in stock market, okay, study the market and the stocks very, very carefully. एक stock का industry wise breakup होता है. You have to understand how stock market works. Maybe we'll do an exclusive session only on stock market someday. You have to know. Without knowing stock market, जाना नहीं है वहाँ. Don't go to a place which you don't know. वो कहते हैं ना, this again for men only. You will never go to a bar which you don't know, है ना? Imagine you are going to a new town. बम्बई में आप पहली बार जा रहे हैं. Will you go into any bar and drink? आप पहले पूछते ना, यार ठीक है यार, यहाँ मिक्स फिक्स तो नहीं करते. It is like वैसे इधर उधर जाना नहीं. स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह समझ लीजिए. You find out a few stocks in which you are good और उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए. Carefully manage कीजिए. Have your network of people who will inform you. You have to do a lot of reading. पैसा, for money to grow, you have to work very hard. Okay. Remember 4 quadrants. First quadrant, then your investments are small. Second quadrant, when it becomes bigger. Third quadrant, even bigger. That is when you have to pay more attention so that you can take it to fourth quadrant, where money makes money for you. Just somebody like a Warren Buffett. इतना पैसा, money works for him. So that's a fourth. आपको ये principle लगाना है कि हमको fourth quadrant में जाना है. Okay, this is the basic. Of course, before I go to cyber crimes, etc., for all senior citizens, I want to tell you one more thing. Please have a passive source of income. Passive source of income means आपके retirement के बाद you will no longer be able to go to the job. अब job में जाएंगे भी तो nobody wants to employ you. Okay, you are 60, you try, send an application. I am 60 plus. और reply नहीं आएगा. They won't employ. So they do, because old में हो जाता बहुत सारा problem. Office जाते जाते भाई कमर में मोच आ जाएगी. You will have BP and all this. So nobody wants old people for employment. The reality. That's why 60 to 65 is retirement time. During your working days, you should have created a passive source of income. Passive source of income can be rental. Okay. A passive source of rental income can be interest income, investment returns. ये आपको passive source कर सकते हैं. Tax management, please consult a consultant tax management expert. Read all documents carefully. All documents आपको carefully पढ़ना है. You should know about it properly. ये आपकी care. अच्छा. So this is how you have to manage passive source. अच्छा, if you are in a pensionable job, it is very good. आपको आपके जॉब में अगर पेंशन आता है तो nothing like it. And if there are pension schemes to which you can subscribe, they are very good. Health insurance is definitely important, because if there is one thing which takes away all your money, it is health. Again, there's a very good Sanskrit shloka there. Yamaraja namastubhyam Vaidyaraja sahodara. Sorry, Vaidyaraja namastubhyam Yamaraja sahodara. Yamaraj se bhi more powerful है डॉक्टर Vaidyaraja. Yama हरति प्राणान. यमराज जो है प्राण ले जाता है. वैद्य राजा हरति प्राणान धनानि च, पैसा भी ले जाता है. So be careful. No due respect to Dr. Saroj. No disrespect. Meaning medical expenses have become so expensive. Unbelievable. आप अंदर जाओ for a dental cleaning. कुछ नहीं, आपने ब्रश नहीं किया इसलिए वो डॉक्टर ब्रश करता है. You have not brushed properly. आप डेली ब्रश करेंगे तो वहां जाने की जरूरत नहीं. Because you are not brushing properly, not cleaning properly, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. तो वो एक स्केलिंग करेंगे 5,500 रुपए. फिर देखते देखते बोलेंगे एक फिलिंग करना है 5,500 रुपए. 11,000 तो गया. फिर बोलेंगे बहुत सारा डर्ट है इसके अंदर, उसको लेजर से क्लीन करना है. एक एक सेक्शन के लिए 5,000 रुपए. आपके मुंह को 6 सेक्शन में बांटेंगे, आपको हो गया 50,000 रुपीज. एंड इंश्योरेंस कंपनीज विल नॉट पे फॉर. फिर आप बोलेंगे कि मेरा ये नीचे वाला दांत ठीक नहीं है. बोले मेडिकल आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवा दूं, सीधा करवा दूं.
आप सीधा करके शाहरुख खान के साथ हीरोइन करने वाले हैं क्या? हाउ मच सर? 1,30,000 ओनली पर टीथ। हो गया, 32 के 32 निकल जाएंगे, 32 लाख रुपए लग जाए। सो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत एक्सपेंसिव हो गए। सो बी अ लिटिल वॉचफुल देयर। मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी नेसेसरी। चेक द बैकग्राउंड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, कैसे पे करता है वो याद रखिए। वो मुन्ना भाई का एडवर्टाइजमेंट आता ना, इसमें कॉटन फ्री है, नहीं है, कॉटन कवर्ड नहीं है, ये कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं है, सब आप वॉच कर लीजिए। आस्क क्वेश्चंस टू द फेलो हु इज सेलिंग यू इंश्योरेंस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस एक जमाने में बहुत ही वैलिड था। नाउ इट इज नो लॉन्गर दैट इंपॉर्टेंट। अगर करना है तो टर्म इंश्योरेंस कीजिए। टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम लो होता है, रिटर्न हाई। रिटर्न, डोंट लुक फॉर इंश्योरेंस फॉर रिटर्न। Insurance is not meant for return. Insurance is meant for survival. If I and my wife both are earning, we don't need insurance because our earning will take care. If your employers give you insurance, see that you get a top up so that it can be continued after you cease employment. So, yeah, health insurance. Now, I want to come to a very important area. It is called, आजकल क्या हो गया? There is a lot of digital banking. Digital banking has come into mobile banking. आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, you can open the account here और उसमें से put in your password, transfer money to me. What is the basis? आपको एक पिन डालना पड़ेगा, and when you are putting the password, it will ask for an OTP. That OTP is not to be shared even with yourself. Loud में भी नहीं बोलना है. OTP means it's really a one-time password, secret number hai. Preferably, don't use your mobile phone for transferring money. Use it only for checking balances. Paisa hai, check kar lijiye. And don't use it for transferring huge amounts of money. जैसे phone pay वगैरह वगैरह है, use it for transferring limited amount of money. And ये जो notebook है, इसमें प्लीज ट्रैक ऑफ एवरी बिट ऑफ ऑल दीज ट्रांसफर्स यू मेड, किसके लिए कहां आपने दिया है, नोट करके रख लीजिए। बिकॉज आपके पास स्टेटमेंट आएगा, या वंडरफुल, शी इज ऑलरेडी डूइंग इट, आशा मैम इज ऑलरेडी डूइंग इट। कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। पैसा, देयर इज अ बुक बाय गैलब्रेथ्स, उन्होंने लिखा है मनी वेयर इट कम्स फ्रॉम वेयर इट गोज। तो आपके पास सोर्स ऑफ फंड्स भी होना चाहिए एंड यूज ऑफ फंड्स भी हो, कहां कहां पैसा जाता है। Keep track of where your money goes. Put it into various heads. Medical itna hai, household expenses itna hai. Break it up. And every month you keep checking what is your surplus, kitna excess. If this month there is more expenses than income, find out how you are filling up those gaps. Okay? And very important, then you are transferring money online. Okay? Before you transfer money, there is one transfer facility called quick transfer. Quick transfer without adding beneficiary. Don't use that option at all. इसका मतलब है, I want to transfer money to any one of you. आप अपना मोबाइल नंबर दे दिए, I can transfer money. Suppose I put one number wrong, money will go to somebody else. वो वापस नहीं मिलेगा. And that fellow will say, no, I have not received, I have to check. So don't use quick transfer method. Add beneficiary option होता है. Please go to add beneficiary option. Add beneficiary. उसमें you have to put the bank account number, then your IFSC code number. ये सब डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा. Add the number. Then after 24 hours, it will say confirm. After you confirm, उसमें आप लिमिट डाल दीजिए कि इन दिस बेनिफिशियरी को हम नॉट मोर देन 25,000 एट अ टाइम करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स, एंड मैनेज इट प्रोएक्टिवली. समबडी सेज ट्रांसफर मनी टू मी, बोलिए हाँ ट्रांसफर करेंगे. इट इज मोर देन 10,000, आई विल गो होम, ट्रांसफर इट ओनली फ्रॉम माई लैपटॉप. डोंट गेट इनटू वेसाइड कैब कियोस्क एंड ट्रांसफर मनी. इट विल बी डन ओनली फ्रॉम माई डेडिकेटेड लैपटॉप. हम किसी और के लैपटॉप से भी नहीं करेंगे. देन आपको एक रिक्वेस्ट आएगा ओकेशन कि Mike, you are trying to transfer money, it is not working properly. So what you will do,
इंटरनेट में जाके यू विल हंट फॉर अ हेल्पलाइन, यू विल गेट सम हेल्पलाइन. आप उसमें क्लिक करके बोलेंगे कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम्स विथ योर बैंक. फॉरन एक कॉल आए, आई एम फ्रॉम दिस बैंक and we will help you sort it out, sir. Do you have any desk app? There is an app called Any Desk. Immediately अभी आप डाउनलोड कर सकती हैं. It gets downloaded in minutes. Minutes क्या, seconds. अच्छा, Any Desk खोलिए. हाँ खोलिए. उसमें एक 6 डिजिट नंबर आएगा, वो आप हमें बताइए. हाँ बताया. एक्टिव कीजिए. एक्टिवेट कर दिया, आपका स्क्रीन मेरे पास आ गया. I have taken control of your screen. अब आप अकाउंट खोलिए, पासवर्ड डालिए, सब मिल गया मुझको. सो एनी डेस्क एप्लीकेशन आप ईश्वर से भी शेयर नहीं करना है, डाउनलोड भी नहीं करना. इफ एट ऑल योर कंप्यूटर रन्स इनटू प्रॉब्लम, फॉर सेटिंग द कंप्यूटर राइट, यू कैन डाउनलोड एनी डेस्क ओनली फॉर दैट ऑपरेशन. उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर दें. सो डोंट डाउनलोड एनी डेस्क. वॉच आउट फॉर, आपको एक फोन आए, your debit card is blocked, your account is blocked. So when you get that information, they will say, please give me this. आपको एक OTP आएगा, शेयर कीजिए, your account will be released. अच्छा, assuming you are a Bangalore Vasi and you are in Gurgaon and you are having an account in Yes Bank. तो you will be thinking, हाँ भाई Bangalore जाके by the time I do that it will take time, तब तक ब्लॉक हो गया तो क्या होगा. Don't worry, whoever it is, उनका नंबर नोट कर लीजिए, ignore the call. And if at all there is a problem, walk to the nearest branch of that bank. बोलिए इस नंबर से कॉल आया था. Can you confirm whether it is a genuine call? Because banks will never call you for KYC on the phone. वो बोलेंगे KYC online update कीजिए. And when you go into a bank's website, please see it will have HTTPS. And नीचे एक there'll be a closed lock there. That means it's a safe, secure site. वरना what you call phishing, इधर उधर के साइट में जाना ही नहीं है. Just as you are careful with your money in the pocket, be very careful with the money in the bank. इधर उधर, don't press anything. Don't get what do you call flustered by somebody telling you आपका account block हो जाएगा. Nobody can block your account. If somebody blocks your account, you come, I will come to that procedure. Nobody can block your account. It is your money and nobody can block your account. Even income tax can only block your account only after sending you notice. वो बोल सकते हैं कि आपने इतना टैक्स नहीं भरा, we are going to send a notice to your bank and recover from the bank. Frozen हो तो आपको show cause notice मिलेगा. अरे they are not able to block the accounts of our Malias and माल लेके भाग गया, उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपका, और हमका क्या करें? They won't. So be very proactive in the management. Don't use multiple payment sites. Phone pay use करते हैं तो only phone pay. Somebody says, madam urgently pay करना है. You say, no, it is not connecting. I will not do. आप कल तक आ जाओ, या आपका सामान लेके चले जाओ. Remember, India is a buyer's market now. एक जमाना था आप जब आपको you had to wait for 6 months to buy one scooter. अब इधर जाओ, now you can buy 5 scooters you can buy now. And it says अब अगले महीने पैसा दीजिए. So it's a buyer's market. Never ever pay advance. बोले नहीं हम एडवांस नहीं देंगे, नहीं चाहिए आपको मटेरियल. Then he will come and say, I wanted to buy something, sir, 30% advance. हम लोग एक पैसा नहीं देंगे. Sir, then we will know. I said, don't supply. 3 days later, the marketing manager called me. He said, sir, वो गधा है सर, उसको कुछ आता नहीं है. Can you pay 10% advance? I said, एक पैसा नहीं देंगे. पूरा डिलीवर होने के बाद पैसा लिया. So you are customer is king. इतना याद रखिए. Don't pay advance and all. बहुत जल्दी नहीं देना. बहुत जल्दी. Especially only all these online courses, astrology course, stock management course. Only 5,999 rupees. You will neither get astrology nor get course. कुछ नहीं होगा. You tell them I will not pay. What is your refund policy? Ask them what's your refund policy. लिख के दो. Okay, this you follow carefully. अच्छा. So don't press all these numbers. Then
occasionally you may get a call from whenever you get a debit card statement तो account में आ जाएगा. When you get a credit card statement, okay, if you are use it sparingly, don't use it very regularly. I'll also tell you the difference between debit card and credit card. Debit card means it goes directly from your account. Credit card means the company will spend and ask you to pay later. Don't even take 1 day's credit, because in credit card, your monthly interest is 2.95% per month. आपको सालाना 36% you will be spending. So don't take any EMI of credit cards वगैरह. वो फोन करेंगे, मैडम you are eligible for EMI. बोलो नहीं चाहिए मुझे EMI. Okay, don't take EMI on credit cards. अच्छा, credit card का statement आएगा आपके पास. Opt for electronic statement, no problem. Statement download करके check every transaction that you made. If there is any unauthorized transaction, 30 days के अंदर you can complain to the credit card agency. If there is any unauthorized transaction. And complain loud and clear. एक बार क्या हुआ था? There was a person who was holding a credit card. They came to me and said, sir, मेरे account से 3.25 lakhs निकल गया. I said, कैसे निकल गया? They said they made some mistake and they said आपका mistake हो गया, so please your payment did not go through, pay again. So she pressed pay again. They called and said आपको एक OTP आया होगा. She said हाँ आया है, this is the OT number. So 1,25,000 went out 6 times. So imagine how many times this was. Finally case waste करके she got it back to the bench. उसके BP sugar level सब बढ़ गए during the period. So don't trust all these platforms and things like that. Very, very carefully manage कीजिए. Any call, there is a number available, and if you call in that number, आपको any unauthorized transaction within 12 hours आप call करेंगे तो आपको पैसा फौरन आ जाए. Because there is a network. See, money moves like this. Suppose money moves from our Archana's account to Dolly G's account. So first what happens, it will be debited to Archana's account. Dolly's account will not be credited till tomorrow, unless it's IMPS. It will be debited. It will go to a payment clearing system. Reserve Bank chalata hai. So it will go into the system. Wahan it moves, by electronic signals to Dolly's bank. Dolly's bank, it will go to a service branch. From the service branch, it will come to your branch. It will possibly take 24 hours. So आप foreign complaint करेंगे तो they can stop the movement of the funds immediately and return it. Okay, so watch your money carefully. Careful services. Every bank has an ombudsman. So आपको कोई शिकायत है banking के ऊपर, they have not credited on time, they have wrongly debited your account, you are getting frequent calls, please call and complain to the ombudsman. He is called a nodal officer. He is a nodal officer for customer grievance. उसमें से आपको 1 महीने तक आपको reply नहीं आया, तो in your local area there will be a reserve bank, and the reserve bank will have an ombudsman. वहां लिखित आप complain कीजिए with a copy of the complaint you made to the bank. You will get a grievance redressal. I once got a bill from Punjab. I don't want to mention the bank. एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए they send me a bill. I said I don't want that card. They didn't send me anything at all. So annual fee for the card was about 5,000 rupees. I said I don't want this expensive card. After for 2-3 years कुछ नहीं आया. At the end of 3 years they said your due is 5,000, 15,000 plus interest. Your total due is 26,000, and your card has been blocked, and your credit हमने complaint कर दिया to credit agency. So that means I will not get a loan. So I told them, when did I take the card in the first place? Well, they were not even replying. So I wrote them and I complained to the Reserve Bank of India. Of course, not because I was from Reserve Bank, but even otherwise I filed a complaint with the ombudsman. The ombudsman not only made them reverse the entry, restore my credit, and gave me a compensation of 10,000 rupees for emotional trauma. Then the GM of the bank phone, sir, हमको फोन करना चाहिए था ना. आज ये उल्लू बनाने की बात छोड़ो, 10,000 पहले क्रेडिट करो. So manage your accounts, manage your money
effectively. Just as all forms of literacy, financial literacy is very, very important. पैसे उसी के बाद, लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान दे. Respect money, have literacy about. Only then money will, only then you can grow rich. And remember, growing wealthy is not a sin. पता नहीं किसने दिमाग में बिठा दिया आपको कि मनी इज, किसने बताया मनी इज यूजलेस? Money does not buy you happiness. Doesn't matter. Somebody told me, I also teach Vedanta, I teach Gita online. Somebody told me, money does not buy happiness, sir. I said, yaar, mujhe de do na. Let me find out for myself. You are happy, no? Money does not buy you happiness. I am not convinced. Aap mujhe de do. Let me discover that it does not buy happiness. और अगर काम नहीं किया तो हम सीनियर स्टूडेंट को डोनेशन दे दें. Let me find out for myself that money does not. You don't believe in all this rubbish. Money does not buy happiness. Money buys you a lot of comfort. It buys you, it buys you a certain economic freedom. It buys you self-confidence. And it gives you self-confidence. And you know, it has got a powerful presence. You don't even have to tell people you have money. Even as you get out of your car and walk, money will speak. And people will say, आइए sir, नमस्ते sir. तो मैं गरीब आदमी हूं, छोड़ दीजिए वो बिहार में. इंडिया को बहुत दिन 70 साल चला चुके, मैं गरीब आदमी हूं सर. हम गरीब आदमी नहीं है, हम अमीर है. Money is important. Money is very important. Artha kama, artha is very important. So don't be apologetic about earning money, but earn it according to dharma. Dharma means property. When you earn money according to dharma, it blesses you. आपके अंदर से radiance आता है. If you go to adharma, then you become like all those, you have to run. आप पोर्शे में जाएंगे, किसी को एक्सीडेंट करेंगे, फिर जाके दौड़ के छुपना पड़ेगा आप. Then money is earned by adharma, that's what happens. संदेश काली से भागना पड़ेगा. If you earn it royally, there should be no problem. Money is important. Treat it properly and respect it. Keep track. लिख के रखिए. And your passwords, etc. What to do? Should you write or should you not write? Okay, I have a simple formula for it. All my passwords are written in a Word document. Bank password, iPhone password, iPad password, इसके login password. Every password is written. क्योंकि इतना याद रखना मुश्किल है. And some people have foolish passwords. Like when the Reserve Bank of India, when computers were introduced, I was the only fellow who knew computers. So all the GMs used to call me and they'll say, hey Mohan, what is my password? I said, sir, you are supposed to remember, sir. Say, भूल गए यार, तुम बता दे. I used to remember the password of 20 general managers. एक एक के अलग-अलग notebook. So one fellow, I said, sir, password बनाइए. He said, yes. God is great, his password. मैंने कहा सर पासवर्ड चेंज कीजिए every 3 months. Great is God. बस यही चेंज है उसका. ओम साई राम, साई ओम राम. ऐसे ही चेंज करता था. Any fool will know. Don't make passwords with the 2 letters of your son's name and 2 letters of your daughter's name. Okay, there's a fellow who's got, you know, एक सन का नाम है प्रमोद, दूसरे का नाम है प्रवीण. प्रा है उसका पासवर्ड एवरीवेयर. प्रा 85, pra 89. Son, I said, any fool will disfigure your password. Pra. I said, ये मलयालम में बोलते हैं ना, pra माने प्रांद, माने mad फल. पागल को भी प्रांद बोलते हैं. Okay, so use your passwords intelligently. I put it in a Word document, and that Word document is password protected, which I remember. उसको लिख के नहीं रखता हूँ. So if you have a problem, you can open that password document and see. And what I have done is I have put it in a paper and I have said कि अगर मेरे बाद अगर किसी को problem हुआ, I have nominated some person who can see all this. And अच्छा, every bank account should have a nominee. Please fill in your nominee. Or if you are over 65 years of age and you have sufficient money in hand, how much money is sufficient money? I don't know. Please prepare a will. कि पैसा किस तरह डिस्पोज करना है. How your assets and paisa should be disposed.
and bill को register कर दीजिए, so that after me my children should not fight for money. So ये register कर दीजिए. Okay, these are the simple precautions which you should take for managing your money. So create a will, or kya, that was the only thing. But I mean, individually, I can take you through stock options and options, futures, vagara, vagara, vagara. A very vast subject, but this much understanding. Yeah, if you have any query, you can raise your hand. Yeah, sir, Dr. Saroj, yes. Unmute. Sir, if there is a nominee in the bank, sir, and the same nominee for the locker, and the person doesn't have a joint account, they don't allow this person to open the locker, sir. Yeah, see what After happens the is, demise. Yeah. see what happens So is, what is the procedure? see what happens is, when it comes to a bank account, you are what you call bound by certain laws under the banking laws. But when you are a locker or you take a locker from the bank, then the relationship is different. The relationship is called bailer-bailee. You are putting something in the bank and the bank is giving you a place. It is not guaranteeing anything. It can set up its own law. The nominee that you have given for the bank account need not be valid for the nominee for the locker. No, For sir, the locker, if they insist, if the nominee is a person is nominated for the locker operating, but after one of my friends, she lost her husband, and then the question of this thing was that she was not very much educated, sir. So they were not allowing her daughter, and who is actually the joint this thing. Bearing a joint name in the same account, they were not allowing them to open the locker. See, there are certain rules. See, a joint account is different from a locker. Just because you have a joint account, the locker need not be operated by the bank, may not allow, because I will need to see the whole contract, how it is signed. Only then I'll be able to comment on. The locker is nominated given only to one person. If it is in joint names, then you have to, otherwise the locker should be in it should be in joint names. Yes. Like I have a locker, and when I take my wife along, they say, "Madam cannot go inside, sir. You have to go alone." So yeah, that is what they do. So because, when you're alive, sir, they do like this. After demise, what they will do, God only knows. It depends. See, if it is a joint account, then both should come. It should not. It's not called an E or S account, either or survivor account. There are various types of account. There is an account called either or survivor. There are two people. One fellow dies, the other person can access the account. But suppose it's a joint account and one person goes, means the other person cannot access the account. So we have to check. I would like to check the things and I can advise you super. Yes, and so people are investing in gold and all the gold is in the locker. Yeah. Then if they are not given access, then all this money goes waste. Sir. That's why, where you are putting. No. There is one proviso that in the case of a dead person, they will, if there is a will, the distribution will be made according to the will. If there is no will, they should get a court order saying that this asset can be distributed like this to so and so. That's right. Without a court order, they won't release. They won't release it like that. See, particularly locker. For cash, they will give it to the nominee, they will ask no question. So in a gold, whatever is in the locker is all, it's like a property. You just can't take it away like that. There has to be a court order, there has to be a legal heir certificate, and all the legal heirs, they will depend. If there is a will, there is fine. You have to take a probate of the will. If there is no will, it is called property is the owner of the property died intestate. So the legal procedures are plenty. That we will handle it in a separate section. The NOC from others are legal heirs is also necessary. Raman sir, we will handle it in a separate session. That's okay. We will handle it in a separate session. Because the entire legal thing, when it comes to will, we will handle it in a separate session. Yeah, Vijay wanted to ask a question. Yes. Sir, I wanted to tell Saroj ma'am that if she converts the locker account
into joint account, either or survivor, adding the second name, whoever's name is in the joint account, then either of them can operate. Open the lock. Yes, it should be ERS. But generally, Nominee, yes, nominee doesn't have the right to operate the locker. locker. Right. She's very right. And even some banks are very clear. We will not allow operations in the locker on ERS basis. They are very clear. Locker has to be only on joint account basis. Either both will open, and if one of them goes, the locker is closed. Some banks follow this procedure because it pulls the bank into a legal hassle. The bank becomes a party to a legal dispute. Unnecessary waste of time. So if the account is joint account and one of the persons, say like in my case, my children are abroad and I'm in India and our locker is in India. So if there is joint account, my daughter or my son, they will never be accompanying me. So how No, that's they okay. will? They need not accompany you. You can check with the bank that I am a senior citizen. The local, my son or daughter here would like to be the joint account and would like to have access. You have to enter into two separate. See, when you are entering into a locker, when the bank is giving you a locker, they will enter into an agreement with you and charge a license fee for the license. Apart from that, they will say if the locker key is lost, you have to give the bank the right to break open the lock in your presence. So this agreement has to be signed by two people separately. Very often we say joint account and don't execute the other account. You ask the bank for procedure. Banks are very, very helpful. And if they are not helpful, refuse to move, you say, I would like to talk to your nodal officer. Uska baap bhi karega. Otherwise, you say, I would like to talk to a Reserve Bank officer. In this forum, you know me. Give me a call. I will ask them, I am calling from this bank. And they will help you. So Not a big that means a nominee in the locker has to be a joint holder. Yes. Nominee is not allowed to operate the locker. Nominee can take custody of the key. He is not allowed to operate. No, but if it is joint holder, then they will not give access to one person, sir. No, that's what we say. We have to take a legal course for that. There's a legal course. You have to take a legal course. See, beyond a point of time, locker walker कोई जरिए अंदर घर में safely रख लीजिए. Rather नहीं, than अभी हम तो सर हम सब इधर रहते तो उधर घर में कैसा safe है? It is not safe. if you are if you are in two different places, then it is okay. Keep it in a lock. Okay. Saroji, I want to add one thing. In case you want somebody else also to operate the locker account, then you have to include their name also in the application, locker application, giving the KYC. And the person has to be present in the bank when you are adding the name. Correct. And you can give a power of attorney. With your consent. You can give a specific power of attorney. You can give a specific power of attorney to operate lockers. There's procedure there. The best thing is to go sit with the bank and get the procedure. That is very important. Yeah. One more thing about gold bonds. Very, very important. Gold bonds as of now are doing very well because gold prices are doubling so fast. Like if you have a gold bond purchased 8 years ago, today the value is so high and it is tax-free. The end return is tax-free. So right now it is good. But don't put all the eggs in one basket. Spread your risk. Check your own risk-taking appetite. How much risk can I take? You have to check your risk-taking appetite. Spread your risk. Don't put all your eggs in one basket. And money should not give you tension. Money should give you the joy of managing money. That's why the relaxation is very important here. You see, there is a saying, Tamil saying, if money is in your hands, you manage money. If money comes up to this, money will manage you. हाथ में पैसा हो, मुट्ठी भर पैसा तो आप करता, गले पड़ गई पैसा तो आप गए काम से. So too much money is bad because then what happens is attracts asuras. They will say, sir, we will give you, sir, 1% return more. That's the end of it. I will tell you some wonderful, scandalous, money scams someday. Because today I don't want to build so much threat into your life. Be this careful. Please keep track of your accounts. All your accounts. Kaun se bank mein hai? What's your account number?
KYC up to date किए कि नहीं, every 2 years you have to do KYC. Give your latest photo, and if you are signing, please update your signature. You signed something in 72, in 2024 the signature will be nowhere near that signature. So frequently visit the bank. Yes, Nitin आपते दी बोलिए. Sir, will related a question है. हाँ. Is it mandatory to register will? No, it's not mandatory. और इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? किस एजेंसी के पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलेगा? See what शायद happens. आजकल HDFC बैंक भी करती है शायद. See, the will is your personal document. You can, if you are going to handwrite it, and sign it yourself with 1 or 2 witnesses, the will is valid as such. Okay. अगर आपने type किया तो then it has to be registered. Okay. If you type it, or even in the letter pad में date है, the date is mentioned or Reserve Bank or something is mentioned, then it has to be registered. But top to bottom handwritten will है, so it is accepted as, it should be handwritten by your own hand. एक ब्लैंक पेपर पे A4 साइज का ब्लैंक पेपर पे लिख के A4 में चलेगा, आपके नोटबुक में चलेगा. This And is, you need a doctor, one doctor as a witness, you know, that you were in a sound mind when you wrote the will. नहीं, what happens is two adults are enough. ये डॉक्टर वॉक्टर वो सब ऐड करते हैं, कोई बात, डॉक्टर को फीस देना पड़ेगा. नहीं, वो तो फ्रेंड ही होते हैं ना. He will get one MRI करके आओ और EEG करके आओ, तो 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे. Yes, yes. You should declare, I am so and so, son of so and so, or daughter of so and so, living here. I am making this document out of my free will, and I am in a sound mind. Then write normally. I am not under any coercion or pressure. And write in your normal language. You don't have to think of fancy language. If you don't know English, write in Hindi. If you don't know Hindi, write in a local language. I have so much money in the bank. This money should go to so and so. I have jewelry listed below, should go to so and so. Okay, I've got this money. If I saw a will in which somebody has written, if my daughter marries outside caste, then her money should go to the first sister. If she marries outside religion, she should not get anything from our family. I have seen this happen. First daughter, let's say first daughter is Priya, second daughter is Supriya. If Supriya marries out of caste, so property should go to Priya. तो देखिए अपने आप दोनों अपने ही कम्युनिटी में शादी किए गए. But after marriage they divorced because divorce के बारे में कुछ नहीं लिखा. पर शादी नहीं कर सके, करते ही प्रॉपर्टी निकल जाए. Very carefully somebody has done. But remember, what happens, sir? Sometimes you change your mind, sir. Then change it, no problem. You can write a codicil. समझिए आपने, you made a will today. Tomorrow you want to make a will, you can cancel the old will and make a new will. Or you can date it afresh and you say, I am making a fresh will today. The old will is no longer valid. And usko scratch. Scratch it out. Let all the wills be available in the record. So you have to write again everything. You have to write everything again. Very important. आपकी ये जो notebook होगी ना, in this notebook, please keep track of every bit. I have got so many grams of gold. I've got this kind of jewelry with me. मेरे यहाँ property है. This is where I have. So these are the shares I hold. This is the bank in which I hold. This is the bank account number. In case of emergency, call so and so, my chartered accountant. I have prepared what is called a personal document. वो मेरे laptop के फीस में available है. It is not password protected. You can click it, it will tell you. It is not said where my money is. It will only say who to contact in terms of an emergency. Daughter is in India, so I have said daughter first contact. USA, I mean son abroad, so I said son should be informed immediately. Chartered accountant for any further help. Lawyer so and so for further help. So and so for medical emergencies. Make a list of all these things. इसमें बना के रखिए. And that is called intelligent living. ईश्वर पे भरोसा है, लेकिन जीव प्रयत्न भी जरूरत है.
Believe, trust in God, but lock your car. Okay, remember. भगवान देखेगा, देखेगा. He will give it to a person who is more smarter. If somebody steals your money, he is smarter. वो बोलेगा उधर देखो और ये निकाल के भाग गया. उधर देखो, but hold on to this. कहाँ देखना है? Beware of all, because if you have money, see, the happiest person is the fellow who doesn't have money, because nobody will come to him. But if you have money, even Bhagwan will come to you. Remember that song, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, है ना? वो भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा. आ जाएगा भीख मांगने. And if you are not careful about the terms of the contract, he will push you to Patala. बलि चक्रवर्ती ने, हाँ मेरे सर पे रखो, गया, all money gone. इसीलिए have a good advisor who will advise you properly about money. Sir, that is all right as long as you have somebody at home, sir. The things are different. And when a person, say in my case, suppose I live alone in India and I am dying in spite of everything what you are saying. Like Yes. I have got a will and whatever, documents for my children. But when children are abroad, by the time they come, Yeah. my neighbors know, and I'm dead inside. They break open, they come inside, they take Yeah, yeah. all the keys, Yes, they possible. open, they tear the will. Yeah. They tear the will. What is going to happen? Nothing. Yeah. See, एक चीज है, remember. अभी भगवान में काम नहीं आएगा सर. नहीं, सर, Dr. Sarul, 1 minute. 1 minute. काम आएगा. धर्मेंद्र जी, 1 minute. I want to answer Dr. Saroj's question. One thing is being careful. The other thing is being paranoid. Next door neighbor आके फाड़ देंगे, तो सत्यानाश कर देंगे. That means you are not living in a safe neighborhood. नहीं हो सकता है ऐसा हो सकता है. That possibility is there, but probability is less. Yeah. Okay. That's why you say, in case of an emergency, please call so and so. तो कोई भी आपके, see, if you are going to talk on a public platform, मेरे लॉकर में 1 किलो गोल्ड है, इधर पैसा है, उधर पैसा नहीं, भर क्या कोई भी आके खोल देगा. See, outside always say, मैं गरीब आदमी हूं, कुछ नहीं है, बहुत सारे बिल्स हैं, पे कर दो. So keep your credit card bills, medical bills, grocery bill ऊपर रख देना, उसे देख के भाग जाएंगे लोग, अरे इतना बिल पे करना है. And always remember, don't open your door to anyone. And in an emergency, आपको clearly instructions देना है to somebody. If I am dead and gone, call this number first. You should have a friend or chartered accountant or lawyer who you can immediately reach. हाँ, डॉक्टर धर्मेंद्र सोलंकी. सर, ये टिपिकल केस मेरे साथ में है. मेरे दोनों बच्चे अब्रॉड है, मैं मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं, कब लुढ़क जाए पता नहीं है. वेरी क्लियर, फंडामेंटली आई एम वेरी क्लियर. सो हमने क्या किया है, एक डॉक्यूमेंट, वॉट एवर यू सेड, एक डायरी बनाओ, ये बनाओ, मैंने एक एक्सेल शीट बना दिया है. ओके, राइट फ्रॉम 1 पैसा से लेके मेरा बैंक अकाउंट कहाँ पे है, कौन सी ब्रांच में है, उसमें आज की तारीख में कितना, इट विल कीप ऑन अप एंड डाउन, जैसे जैसा मेरा खर्चा होता है या इनकम होती है. एक बैंक अकाउंट यहाँ पे, दूसरा बैंक अकाउंट यहाँ पे, तीसरा बैंक अकाउंट है. इस बैंक अकाउंट के साथ में मेरा शेयर मार्केट ट्रेडिंग जुड़ा हुआ है. आज की तारीख में मेरे पास इतने शेयर पड़े हुए हैं. वंडरफुल. ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है. बजाज फाइनेंस के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट है. बजाज फाइनेंस का मैनेजर का नंबर सो एंड सो है, और इतना एज ऑफ टुडे इतना मेरा है. पेंशन का मेरा बैंक ऑफ कोटक बैंक से इतना आता है. कोटक बैंक में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो सो एंड सो लेडी एंड सो एंड सो जेंटलमैन आर अवेलेबल. वो पूरा एक एक्सेल शीट बना के, बहुत बढ़िया, एक पूरा विल डॉक्यूमेंट बना के मैंने मेरे लड़कों को और लड़की को भेज दिया. बहुत बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट. अभी अगर मैं मर भी जाता हूं तो मेरा पड़ोसी आके कुछ नहीं कर सकता है. कुछ नहीं कर सकता. दैट इज वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, बिकॉज सी, व्हेन यू इन्वेस्ट सर ह्यूज अमाउंट, ओके, इन एनी काइंड ऑफ सेविंग्स और समथिंग, व्हाट दैट ट्रस्ट इज टू बी बिल्ट. सो व्हाट आई हैव डन, नॉट ओनली टू माय चिल्ड्रन, बट दैट बजाज का जो मैनेजर है, ओके, हु इज फ्रेंड, सम टाइम फ्रेंड टाइप हो बन गए अभी तो उसको भी मैंने मेरे लड़कों के नंबर दे दिए हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज इमीडिएटली इनको कांटेक्ट कर दीजिए. अपार्ट ऑफ दैट मेरे गुजरात में रिलेटिव है, उनको भी वो एक्सेल शीट दिया है. बहुत अच्छा. कि अगर कल मुझे कुछ हो जाता है, सर आई एम टेलिंग यू वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पीपल आर फॉरगेटिंग,
कि अगर हम लोग बोलते हैं ना कि हम नॉमिनी जो जिस तरह से चलते हैं, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को मिलेगा, और मैं और मेरी वाइफ साथ में जाती है और कार का एक्सीडेंट हो गया तो बच्चों को मिलेगा। बट यूएस में हम लोग का क्या होता है, मैं बच्चा बच्ची सब लोग साथ में घूम रहे हैं वहां पे, हम हाँ चारों को हो गया तो आई डोंट वांट दिस मनी टू गो टू गवर्नमेंट फंड, सो आई हैव ऑथोराइज माय एल्डर ब्रदर के यू कैन डू एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी इन अच्छी केस बात, हम चारों को कुछ हो गया तो। ओके, अच्छी बात, this is what the line of action I have already planned. वेरी इंटेलिजेंट। I just wanted to share with madam so that आप यहाँ पे जो भी करते हैं प्लीज कीप एवरीथिंग इन्फॉर्म टू योर किड्स, इंक्लूडिंग अगर विल बनाए तो उनका भी एक कॉपी दे दीजिए, तो दे आर अवेयर कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट, दैट्स अ गुड आइडिया, गुड आइडिया। Update that Excel sheet every 6 months or 8 months whenever you are comfortable, क्योंकि देयर आपका शुड पैसा बी देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट क्लोज बाय। एग्जैक्टली। अब एक सी वी हैव गॉट अ वेरी पावरफुल सोशल मीडिया, and because of the social media, one big advantage, समझिए, I don't come on a Thursday 12 noon, I will get 67 telephone calls. क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, क्या हो गया सर। I run a meditation camp at 6:30 in the morning. 6:31 हमने लॉग इन नहीं किया तो I get 10 telephone calls. Monday 5:30 बजे। So social media में, on whatever media, be a little active person so that you are missed when something doesn't happen. होता है। See, if you don't remove your milk from your doorstep at 6 o'clock every day, the neighbor will notice कि milk remove नहीं किया। Okay, so people are there. It is, see, unless you live in a forest area with 200 acres of land, nobody there except a cat, then even the cat will run away. आजकल के gated community में आप रहते हैं, तो you make your friends, you have your morning walk, you have your chanting groups. वो बोलेंगे ना, अरे so and so, why they have not come? So network also intelligently. This intelligent network की जरूरत है। Don't be an isolated recluse. Even sannyasis are not recluses. वो उनके contact रहते हैं। भाई कुछ हो गया तो मुझे जल समाधि दो, कुछ करके जाते हैं। So वैसे है। And the trust in God has to be reasonably interpreted to see that even practical life is. बड़ा लंबा सेशन हो गया। Good, very nice. I'm so happy. I'll conduct other sessions for you, like exclusive session on stock market. हम बता देंगे how to deal in stock market. And never enter anything you're doubtful about. Don't get into anything which is not legal. Somebody will come and tell you, I will give you a paper which will say 12% interest, लेकिन आपको personally हम 3% extra दे देंगे। दूर रहना वैसे लोगों से। Because he will give you 3% for 3 months. Thereafter, you won't see it. All of us have lost money like that. And then please, very careful, don't be greedy about lobha. Always somebody will give more interest. In fact, if you understand, in Japan, no interest is given on your bank account. Savings bank, yeah, very important question. How much money should you have in your savings bank account? Depends upon your income. आप अगर 1.5 लाख कमाते हैं तो have about 2 months income is good enough. If you earn only 2,000-3,000 rupees, then you should have about 1 year's. Not less than 50,000 rupees should be available for immediate withdrawal. 50,000 to 1 lakh of rupees. Now your salary is 2.5 lakhs per month. 1 month is enough for you. And yeah, if you are doing FDs, you add a facility called sweep in. That means आपके अकाउंट में 1,000 रुपए बैलेंस है and you have to make a payment of 10,000 rupees, वो FD में से sweep in करके दे देंगे. It's called sweep in facility. Check with your bank. It is very comfortable. Read all documents carefully. Manage your money yourself. It gives me some ideas. Maybe I will discuss with Archana, Firoz and people, and we will start some emergency platform. अभी idea अभी आज बन रहा है. Something there you can reach out in an emergency and we'll try and help. पैसा कुछ करने की सोचेंगे. Let's put our heads together. Yeah, सर एक Dolly छोटा सा ma'am. क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी डॉली जी। Sir, what you said and what Dr. Dharmendra is saying, there is a contrast in both the statements. Like you said कि आप अपना जो भी will है या जो भी है वो सब कुछ आप अपने तक ही रखिए और किसी को भी नहीं बताइए।
एंड ही सेड कि मैंने सब कुछ अपने बच्चों को, अपने बड़े ब्रदर को सब कुछ बता दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, वो मैं जानना चाह रही थी। वन डे मैंने ये कहा कि पब्लिकली नहीं बताना, साहब का पब्लिक कहना ये है। प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेरे पास बजाज इन्वेस्टमेंट का 10 करोड़ है, गोल्ड 12 करोड़ है, किसी को नहीं बोला। प्राइवेटली एक्सेल शीट बनाना है, एक्सेल शीट बना के उसको कहते हैं ना स्टेक होल्डर के पास पकड़ाना। आपके बच्चे आपके स्टेक होल्डर हैं, यस, आपके ब्रदर स्टेक होल्डर हैं, ब्रदर क्या मेरे वाइफ के ब्रदर स्टेक होल्डर हैं, साला बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है, स्टेक होल्डर है, और घर में ऐसे ना, सो कीप इट। और ऐसा नहीं कि भाई एवरी रिलेटिव को है कि आपके पास यू हैव गॉट 15 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 15 को नहीं देना, तो देन दे विल प्लान ये कब जाएगा और कब हमें हाथ लगेगी। नहीं, इट्स योर ट्रस्ट विल कि आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को ही जाना है, तो दे शुड बी अवेयर। दे शुड बी। एक वर्स्ट सिनेरियो मैंने लिया कि अगर हम यूएस गए हैं, एक ही कार में घूम रहे हैं और चारों को कुछ हो गया, ओके, इन दैट केस माय ब्रदर शुड बी अवेयर कि यस मेरे भाई का ऐसा ऐसा है, तो ये आपको सारी प्रॉपर्टी। चारों आप गाड़ी में चढ़ने से पहले आप बोलिए बजरंग बली की जय हो, ताकि हमारी यस यस बोलते हैं सर, हमेशा बोलते और हैं। उसके बाद भी एक्सीडेंट हो गया तो आपके ब्रदर के पास डॉक्यूमेंट। और ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आपके घर में वेयर पीपल कैन प्रोमिनेंटली सी, एक अच्छा गुड क्वालिटी क्लॉथ कवर लेना है। उस क्लॉथ कवर के आपके अंदर ये डॉक्यूमेंट सील करके यू क्लोज द कवर एंड से टू बी ओपन्ड ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो नेबर खोल के देखेगा, तो अगर समझिए, इसको कहते हैं ना अकाल मृत्यु। दैट्स व्हाई आवर प्रेयर इज डोंट गिव मी अकाल मृत्यु, गिव यू अनायास मृत्यु। मृत्यु का मतलब है मैं बता के बाय टुमारो आई एम नॉट कमिंग, वैसे बोल के जाना, अगर हो सके डेथ तो बढ़िया है। इमेजिन आई टेल एवरीबॉडी ऑन अ थर्सडे थैंक यू वेरी मच, आई सी यू इन योर नेक्स्ट जन्म, कितना बढ़िया होगा। सो अकाल मृत्यु अगर हो जाए तो नेचुरली पुलिस विल हैव एक्सेस, और ऐसा डॉक्यूमेंट मिल जाए तो पुलिस विल हैव अ लॉट। There is a document, it's called don't open unless there is an emergency, and keep it prominent कि उसको लग के वो लॉकर के अंदर रखे, वो लॉकर को लॉकर के अंदर दूसरे लॉकर में रख देंगे तो नहीं मिलेगा। emergency document should be available. And as you grow older, have people who you can trust, perhaps move into assisted living, and before that settle your affairs। बहुत सारे पैसे छोड़ के नहीं जा, settle it, लेने दो, have a regular income। बस उसके बाद imagine you are already having a steady income, 80 plus 90 plus होने वाला है, उसके बाद I want to have 30% tax saving, क्या करेंगे डेली? Okay, thank you very much. Any more questions? Fine, thank you Archana for arranging this session. Thank you so much, sir. I told her because she said let people read the book. Unfortunately, there is no one single book available on how to manage money because nobody has the final answer. Even Mahalakshmi ne bhi nahi diya hai how to manage. It only says manage money intelligently. Yeah. It only Sir, says. Sir, can I talk to you personally? Yeah, anytime. Thank you. Thank you, sir. Anytime, Only Apoli, I will one guide. thing, sir. Thank you. Well, Yes. sir, my suggestion to all the ladies is there, take active part in investment as well. Yes, yes, perfectly. Please Because, manage your we money people proactively. Don't ever proactively. say What happens? What happens? proactively. The girls, the ladies, we are educated, we earn, but ultimately give that earned money to husband. Of course, there's no this thing, as long as this thing is there, but you should know when to buy the property, how to buy, how to talk to people. When you can do that, and you know the If you have pros an and cons. if you have an independent source of income, this is my suggestion to all ladies. If you have an independent source of income, let not your income flow into the husband's account. It should flow into your account. From out of that and from out of your husband's, you can have a joint account in which it should flow together. Because for good or for bad, once upon a time, we all married for life. If you look at a basic Hindu ritual, there is no provision for remarriage. अब देखिए,
We have to create provision. There is no provision for remarriage. So there is nothing called divorce. So once divorce came in, अब क्या हो गया ना? They said, sorry, again, nothing against women. They say women are very good housekeepers. Because in case of a divorce, they keep the house. आदमी को घर से निकाल देते हैं. So in case such a dispute happens, and when I'm seeing it's very painful, people fighting over, I bought you this, we bought you this, इसको separate करो. And children are and witness to that. I bought you a diamond necklace last year. इसको वापस करो. Hey. So that kind of ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए. We are living in Kali Yuga. So Kali Yuga में intelligent way. श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाइए. He will drive your chariot. Our India में there's nothing secular. No, everything is spiritual only. Who is your best friend? Shri Krishna. Whatever कहेगा जहां लड़ना है बोलेगा लड़ो, जहां बोला शांत रहना है रहो. So it's a very beautiful culture where ultimate individual dharma is brought out very beautifully. So money, if you are aligned to dharma, you will manage very. It's a wonderful show. बहुत अच्छा है. 2 घंटे होने वाला. Yeah, it was very nice session. It's very We'll try to पैसे में सबको organize इंटरेस्ट है. one That more. shows that everybody is interested in money, you know. और यहाँ म्यूजिक और पैसे में बहुत इंटरेस्ट. And I also notice whenever I come online, minimum 2 घंटा हो जाता है. it's a beautiful session. You have a lot of knowledge about this. Yes, yes. Will do. And I will take you through stock market one day. I will take you through will preparation. We will arrange one more session on how to write wills and all. एक will session, how to write will. We will do that. Everybody will learn how to write it. Take correct. pen and paper with you, and we will write. We will write a simple will. एक्चुअली सर वो विल भी है ना श्री कृष्ण पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कितना भी आप विल बनाएं, अगर बच्चों का आपस में ये नहीं होगा तो वो डिस्प्यूट होना ही नहीं है किसी भी चीज में. क्या करेंगे अगर दो आपने आप अगर रजिस्टर करो, आप कुछ भी करो. आपने अगर पांडव दुर्योधन क्रिएट किया तो होगा ही. Hey, one more thing which I wanted to tell you, where I mentioned, Rashmi mentioned that I got my daughter married and things like that. See, we follow what is called Dharma Shastra. In Dharma Shastra, educating your children alone is your dharma. उनकी शादी करवाना, पोती और नाती की शादी करवाना, उनके लिए घर बनवाना, ये आपकी धर्म नहीं है. Dharma means your bounden duty, given responsibility. It is not your responsibility. आपको उनको educate करना है so that they can choose their life partner properly. So these days what is happened is I want to build a property for my son. First son, second son. Then got 2 grandchild also. ये होता रहेगा, कितना प्रॉपर्टी रखेंगे आप? And who will पागल हो जाएंगे इधर उधर दौड़ते दौड़ते. It is not your responsibility. Even getting your daughter or son married is not your responsibility. करते हैं another thing. The problem is in India, the women folk in particular have a lot of vatsalya. Means you give birth to a son, उसको 120 years हो गया तब भी वात्सल्य. आपको महाभारत में you have to see the episode. Bhishma goes to Ganga and says, माता मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में हूं. I have promised to take care of Hastinapura, but these people are following the path of adharma. क्या करूं? What does Ganga reply? आर्यपमयी क्या कहती है? पुत्र, तुमने मुझे पूछ के ये शपथ लिया था क्या? अब भुगतो. She didn't say भुगतो साले. She didn't say that. मैं डायलॉग लिखता तो भीष्म तूने मुझे पूछा था, नहीं सर, तो भुगतो साल. He took a promise ना, कुछ भी हो जाए हम हस्तिनापुर के पीछे रहेंगे. यार अधर्मी बैठे वहां, उसके पीछे रहोगे. भुगतो. What is the book? आपको ईशु वाले शैया में लेटना पड़ेगा, लाइफ सपोर्ट में जिंदगी बितानी पड़ेगी. That is the beauty of dharma. So therefore we should be very clear. बच्चों को भाई उनके taking care of their marriage. After their marriage, they will make 3 children. They have both of them have to go to work. You have to look after the children. नहीं है वैसा कुछ नहीं.
यू आर अफ्रेड कि नहीं देखेंगे तो भाई हमारा मृत शरीर को अग्नि कौन देगा, नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर डेड एंड गॉन, इट इज देयर बिजनेस। हाउ डज इट मैटर वो अग्नि दे या पानी में फेंक दे या कौवा को खिला दे, हाउ डज इट मैटर? सो वी शुड लर्न टू बिकम, as we grow older, Detachment. नहीं, detachment, I won't call it detachment. Intelligent attachment. It is called, two words are used, which I use in all my lectures. It is called Vivek, Vairagya. Vivek means buddhi, Vairagya means safe distance. आपको डायबिटीज है, आपको बंगाल जा रही है, वहां एक स्वीट शॉप है, बाहर से देखिए किसी को कुछ छूना नहीं, वहां रसगुल्ला खाना नहीं है, डब्बा खरीद के किसी को दे देना, दैट्स कॉल्ड वैराग्य. So Vivek, Vairagya, two dominant qualities. For managing money, you need Vivek, Vairagya. If Vivek, Vairagya ho, to everything falls in place. And another thing, when you say you believe, it is not a belief, it is called trust in God. In trust in God means you will never be ever thrown into a situation which you will not be able to handle. अभी जैसे डॉक्टर ने कहा हम लोग जा रहे हैं यूएसए में, चारों का एक्सीडेंट, अरे हमारे 7 जनरेशन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं. आई एम गोइंग बैक 3 generations. Nobody has died in an accident in my family. So there is no chance that I will also die in an accident. That is called Shraddha. हो जाए तो यार, then भगवान will say, अच्छा यार कर दो यार इसको, ये perhaps he has a desire. मैं अकेले बाथरूम में जाऊं, गिर गया और मर गया तो क्या होगा? तो भगवान सोचते हैं कि भाई इसकी ये perhaps the person needs, दिला दो इसको बाथरूम में डेथ. तो that is called the power of sankalpa. Every day before going to bed, you do 2 lines. Anayasena maranam dehi. Vina dainyena जीवितम देही. मैं किसी के सामने मोहताज नहीं हूं, ऐसा होना चाहिए. And when I die, when I pass away, it should be effortless. धर्मराज रुको यार, अभी आता हूं. Bye everybody, I should walk. Sir, it's pleasure listening to you. कितनी भी देर सुन सकते हैं आपको. You speak so well. Wonderful. So remember, and this is called sankalpa. The power of sankalpa, if you do, you can make it happen. You can make it happen. Let me share with you. The flat in which I'm living, I got it about 22 years ago. You know the power of sankalpa? I got an apartment exactly as I want. And before retirement, I said, before retirement, every penny should be repaid. I have no debts. I said I should educate my children out of my earnings, not by borrowed funds. I did not borrow 1 penny for my daughter's or son's education. Then I said, one more sankalpa, may I able to get my son and daughter married according to their choice. They've got wonderful partners. May I be empowered. May they be empowered to live well. This is power of Sankalpa. This is not just Bhagavan, it's power. Oh Lord, make it happen. Karo, karke dikhao. If that is the kind of faith you have, you can rewrite your destiny. ये अपने जैसे ना, आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं. Name, gender, male. The moment you put M, some cells will open, some cells will close. That is the power of Sankalpa. You wish that I should never have Akala Mrityu. Nahi hogi. I should never have Vyadhi. Nahi hogi. There should never be Klesha in my family. Nahi hogi. That's the power of Sankalpa. This system is a very powerful system. Ishwar ka hai. Ishwar Shakti is here. Why do you take it lightly? You say, never mind, nothing will happen. Nobody will touch my money. Neighbor आके कुछ हिम्मत ही नहीं, दरवाजा खोलने, फ्रिज नहीं खोल पाएगा. Forget about this. Don't be. This is called paranoid. डर है अंदर से. And if there are neighbors who really love to come in, 2-4 Scotch whiskey bottle रख लीजिए, वो पी के आउट हो जाए.
real Scotch whiskey, good quality, red label, black label, लिख दीजिए. और if your next door neighbor is एक वो बेवड़ा हो तो इसे चल यार पार्टी करते हैं, वो अपना संपत्ति भूल जाए. This is said in jest. Sir, if you permit, I want to share one एक थोड़ा laughter type का है. हाँ जी. I had one a case of excessive fear of the death. Okay. So when I was treating him, that gentleman stays at the 12th floor. तो he said me one thing के सर मुझे बहुत डर लगता है मरने का. तो मैं बोला आप एक बार मर के देख लीजिए तो डर शायद चला जाएगा. तो he said मेरा चिंता वो नहीं है, मेरा चिंता अलग है. मैं बोला क्या है? तो he said के तो I happen to go to that area. तो he said sir आइए for a cup of tea. तो I went there. तो उसका जो लिफ्ट है ना उसमें हार्डली 2 people can stand up to 12th floor. That's a old building. अभी जो नया अपार्टमेंट नहीं, ओल्ड बिल्डिंग है. तो उसमें अब 2 आदमी खड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई पतले हैं तो तीसरा आदमी घुस सकता है. तो ही सेड कि अगर मैं मर गया यहाँ पे 12th फ्लोर में तो ये लोग मुझे नीचे कैसे लेके आएंगे? वो स्ट्रेचर नहीं जा सकता है, व्हील चेयर भी नहीं जा सकता है, तो ये लोग कैसे लेके? मैं बोला आप चिंता मत करिए. उनकी बालकनी में गया, मैं बोला उसको कैसा है ना रोप बांध के यहाँ से आपको लटका देंगे. बोले सर ऐसे कैसे लटका देंगे? मैं बोला अभी तो तू तो मर गया है ना, तो तू चिंता क्यों करता है भाई? अब वो तुझे ऊपर से फेंक दे, लटका के लेके. हम लोग है ना उसमें बहुत लगे रहते जो नहीं है. लेट मी एज अ साइकोलॉजिस्ट सर आई एम गेटिंग सो मेनी केसेस Anyways, एक टेंशन को इतना प्रॉब्लम फ्यूचर. अरे भाई देखिए फ्यूचर की चिंता में आप लोग अभी जीना छोड़ देते हो. छोड़ देते प्रॉब्लम. ये टेंशन को लेके बहुत बड़ी अच्छी कहानी है. एक बंदा स्कूटर में जा रहा है तो उससे का बहुत टेंशन है. बोला क्या टेंशन है? एक औरत ने लिफ्ट मांगी. तो ठीक है, तो टेंशन क्या है? नहीं, औरत को लिफ्ट देना टेंशन है उसको गाड़ी में. फिर भी टेंशन में बिठा लिया गाड़ी. थोड़ी देर बाद एक सडन ब्रेक दिया, औरत नीचे गिर गई. टेंशन हुआ, नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए. तो हॉस्पिटल में ले गए और चेक करके वो बोलते हैं कि लड़की, ये जो औरत है 3 मंथ प्रेग्नेंट है. तो बोले यार मैं नहीं हूं यार, मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, मुझे छोड़ दो. शी सेज ही इज दिस फेलो इज द हस्बैंड. तो टेंशन हो गया. तो देन उसने फिर चेकिंग वेकिंग किया, डीएनए टेस्ट किया, एंड दे डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट द हस्बैंड. दे डिड अ फर्दर टेस्ट. दे सेड यार ये कभी बाप बन ही नहीं सकता. तो इसे यार और टेंशन बढ़ गया, क्योंकि अगर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो घर में 2 बच्चे हैं, वो किसके हैं? तो ये टेंशन है ना, खत्म होती नहीं है, होती रहेगी आपको. लेस जर्नी unless and until you make it a stop. आपको ये पूरा खींचता ही रहता है. वो आदमी मरा नहीं है, बोलता है मुझे उतारेंगे कैसे 12th फ्लोर से? See, it is a practical case. When we were writing option, हमको पेंशन चाहिए या प्रोविडेंट फंड चाहिए, we were all asked to give option. मेरा कोलीग बोल रहा है कि Sir, it is a truth, sir, what he's saying na, what Dr. Dharmendra is saying. It's I will tell you my this thing story, sir. When my husband passed away, he was having cancer, so he was in ICU and he passed away in hospital, at the hospital, not in my own hospital, because he needed, just before his death, he needed dialysis. So we had to take him to other hospital. And then when he passed away, just before that, we had 3 years before that, we had bought another house away from the hospital. Before that, we used to live just above the hospital. And what used to happen, patients used to come आराम से खाना वाना खा के ना रात को 11 बजे, as a friend, they will come and do consulting, So we were disturbed quite a lot. So we wanted to stay little away from the hospital. So हम एक दूसरे घर में गए थे. जैसे आपने कहा ना, हमको भी हमारा ड्रीम हाउस मिला था. उसके पहले हम लोगों को अपना घर था, जैसे उसके साथ में टेरेस थी, टेरेस पे 50 झाड़ थे, झूला था, सब कुछ वैसे ही टाइप का घर हमको थोड़ी दूर पे मिल गया. लेकिन उसमें जो लिफ्ट था ना, इतना वो छोटा लिफ्ट था कि उसमें 3 लोग या 4 लोग ही जा सकते हैं. कुछ सामान, nothing was allowed. So when my husband passed away, we had to take him, ऐसा वो होली बात वगैरह देना रहता ना मरने के बाद में. तो अभी वो लिफ्ट में अलाउ नहीं करते हैं और लिफ्ट में जा भी नहीं सकते थे. और उसकी जो सीढ़ियां ऐसी थी ना कि अगर वो उनका जो ऐसा स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं ना, तो एक सर्टेन पॉइंट पे वो टर्न होके जा ही नहीं सकता था ऊपर,
So ultimately, we decided, because in the hospital building where we used to live before, people know him there more than anything else. So straight away, his body was taken to the old place and he was kept there, whatever rituals we had to do. But धर्मेंद्र जो कह रहे हैं ना, वो सच्ची बात है, लेकिन आजकल Yeah. लिफ्ट भी छोटी छोटी होती हो ही नहीं सकता. It was a truth. It's a true story. Like This is it's the a point. fact. See, it is very difficult to accept that one day I won't be there. Because our natural instinct is for survival. Like, when we were filling up form, when we joined, we were told that aapko provident fund chahiye ya pension chahiye. So I was writing pension. So my another colleague wrote, humko yaar provident fund chahiye. I said, why? He said, no, after death, it will be more beneficial for me. I said, tu to mar gaya yaar, aapko provident fund mile ya pension mile, kisko farak padta hai? So this is how people talk. See, after my death, I will get 3 crore rupees if I click. Yeah, after your death, what does it matter whether you get 3 crore? And always remember, money is valued for what it can buy. ठीक है? आपको मैं अभी दूं, I can give you one box of 1 lakh pieces of 1,000 rupee note. Will you take it? It can't buy you even a funeral box. So you don't need it. Yeah, one more thing you have to understand. Suppose you have 22,000 rupee notes in hand. What will you do with it? It is valid for exchange. Okay? You don't have to throw it away, burn it or bury it. If you have 2,000 rupees in hand, we can exchange the money for our private business. आप दुकान में दे सकते हैं. It is legal tender. It is not demonetized. But अगर आप बैंक में देंगे तो बैंक will say give it to the Reserve Bank. They will withdraw from circulation and give you money in exchange. So a lot of people ask me, मेरे पास 40 pieces of 2,000 rupee notes है, क्या करूं? अगर आपको काम नहीं आया तो मुझे दे दो, बहुत काम है मेरे. I need a lot of money. Exchange कहाँ करना है? जाओ रिजर्व बैंक को लेटर लिखो, they will give you a date and you can exchange the money and get it credited to your account. So one day, one is stock. एक दिन आपको better, I will also like to explain to you how this money and things like that work. What is the implication of budget? Why budget? Budget के पहले सब हा क्यों करते हैं? Why stock market increases when there is budget? Or if BJP comes to cover, budget will go. अगर ये नहीं होगा तो budget down होगा, your stock market will fall. ये सब क्या implication है? We will learn some. Let seniors today have this platform and as an education platform. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank And you so we much. will have one more session on how to write will. Sure. That will guide us. We'll And do we will talk about this share market thing also. Sure. Thank you, Archana. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you all. Excellent, Thank you, Mohan, sir. Thank Archana. you all. Thank you very much. All the very Thank best. you, Archana. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Happy weekends. Happy weekend. Good night. Good night. Good night.